शायद से एक आएगा। वेट करना है। एक्सेप्ट कर लेते हैं, चल, करने दो। मैं तो एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तुम्हें वेट करना कर सकते हैं। करने दो। ठीक है, स्टार्ट। Copy that. अच्छे व्यूज आ गए थे, पता है कि इसके पहले वाली स्ट्रीम पे साला कंटिन्यू हो गया, वो तो सही रहता। Let's get it done and हो get गया इस पे home. व्यूज आ गए थे अच्छे, 57 व्यूज आ गए थे स्ट्रीम पे। सही। अरे मैं तुमको एक रेफर किया था ना एडिटर, आज हाँ। मैंने उसको पिंग किया उस पे डिस्कॉर्ड पे। हम्म। वो कह रही है एक एक घंटे तक की फुटेज और 1 मिनट का मोन्टाज बना सकती है। उसका वो $10 होगी। कितना बोली? $10 $10। तो चीप भाई। नहीं ठीक है, डिसेंट प्राइस। 1 घंटे में तुम्हारे 2 गेम आ जाएंगे। Two shorts, two shorts, two shorts. 1 minute. Two shorts. Two shorts. यस यस। Short. इसके बाद वालो। Wait. Wait. They're going short. Good job, guys. You're full of surprises. ये FPS कैसे दिखाते थे यार? ये मतलब कोई शो FPS। अरे उसमें भी है, दोनों में सेटिंग होती है। एक एनवीडिया में भी होती है, अदरवाइज गेम में भी होती है। दोनों में सेट कर सकते हो। एनवीडिया वाला तो बहुत ज्यादा ही अलग सा दिखता है। Voice changer. शॉट शॉट शॉट। हमें न्यू आंसर है। और तभी से ये रानी आ गए जो कि सर भाई मस्त एजेंट यार। किस वाला? ये बूगी मैन का। तो भी वाला हाँ, काउबॉय टाइप का। Very nice. सही है यार, ये महंगा है क्या? नहीं सस्ता है ये तो काफी। जितना तुम्हारा वाला है वही उसी कैटेगरी में आता है शायद ये वाला। मेरा वाला पुश दे स्किन पे
Guys, can you talk in English, please? Nice voice changer. Yeah, I'm agree, bro. Dude, I'm not using a voice changer. You are not using voice changer. Go fuck yourself. Short है. All right. Short है क्या? LT था. Impressive. I'm going A side. Keep cool and we got this. Come on, let's get moving. I got eyes on hostiles. I like that. Short. Grenade! One more short. Easy peasy, lemon squeezy. PC pussy juicy. Yeah, whatever. अभी आपके इससे इको आ रहा है for some reason. पहले नहीं आ रहा था. Oh fuck. Can't listen. Yes. Goes four mid. Oh. Thanks, Alok. Thank you. Easiest job in the world. Everybody fall back. Grenade out. That is not bad at all. Affirmative. Flashbang! Fire in the hole. Flashing shot. Throw it flashbang. Bomb here. Nice. Flashbang. Nice. A shot. Smoke. Here they are. Respawn था क्या? Agreed. Roger. Spawn पे outside दीवार. That's how we roll. Tango Mike. Copy. Good stuff. We got this. Yes. वो तुम मुझे इंस्टा 360 से बनाया ना कुछ कंटेंट? मेरा था एक पैराग्लाइडिंग का है, कायाकिंग का है. Bad guys. सही यार. हाँ डालते कहाँ दिखाओ फिर. अरे मैंने उसको ना मेरे भाई के फोन में, मेरे फोन में जगह नहीं थी. मेरा भाई कनाडा चले गया, वो उसकी फाइल कैसे लूँ वो, और मैं ना एक्सप्लोर करने का टाइम है मेरे पास.
ऐसा हो गया है वो। इसमें वाला वो सबसे बड़ा घटिया झमेला है, इसकी जो फाइल एक्सपोर्ट होती है ना, वो पता नहीं हाँ। इनका INF फॉर्मेट होता है कुछ। हाँ वो अजीब सा ही है कुछ तो भी। वो जानबूझ के करे उन्होंने वो। हाँ बहुत ही बढ़िया बना एकदम। Short, it's a. A side. Yeah. Orman skor mu? O بزنش دیگه. دامن رو زده دست میزنه خب بزن. Please just shut up. शॉट دف کن دف کن دف کن. Difference. Nice, nice. कहाँ है? Fuck. ऊपर है, ऊपर 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 चढ़ा हुआ था उसी उधर। ओ भाई जीजी हो गया था। मैं ई दबा के घूम रहा हूँ, मैं बोला मिल क्यों नहीं रहा है। लो Nice work. Hey, orange, orange. Orange, orange. तो पिंग बढ़ गया मेरा। नाइस। LT। वन मोर LT। लो एंटी वाला। और शॉट कमिंग। Do you mind if I add you? Bro watch this. Watch this. शॉट Short. Watch. For some reason वो इतना घटिया फ्लैश भी बहुत ज्यादा अच्छा यूजफुल था इसके लिए। Orange. That is not bad at all. चलो पॉप चलो। Hey, that'll help. इधर इधर है ना वो रखी है, उसको सेल कर दो। Hey show that Orman bro bir. Oh, shut up. शॉट वो जरा स्मोक पे तुम कर दिया। Fire in the hole. Throwing flashbang. Live grenade. Long crossing long। Long ya Orman long. ये होगा ना क्रॉस अब तक। Hacı Come on, inşallah dude, just go. Why are you so scared? You can do this. Shut the fuck up, let him play. Both of you. Dude, I'll do what I like, okay? So suck my dick. Yeah, fuck you too, bitch. Orman red şöyle Orman bro. Clutch this, please. मैं भाई Hey. Şu adam bir önemiyorum. ये योग अच्छी दिख रही है वैसे। अरे उस वाली को बहुत बढ़िया वो बन गया है स्टिकर्स आने के बाद से। ये जो एमेडिन का टंग है ना, उसके आगे उन्होंने लड़की का स्टिकर लगा दिया। ओह भाई no time. Pis ne veriyor hacı? One. This one.
At least you tried. What do you want? Thank you. Let's do this and get back in time for chow. Here they are. Throwing a grenade. Long are long. Thank you. ठीक है जी सर You're welcome. I think शॉट Fuck. शॉट Xbox. No, please. fucking did. What the fuck? पुलिस को बड़ी गोली यार Let's go, bro. Clutch. Okay. Fuck! Zresztą nie rób, a sam Bezna, escote, Bezna. कैसा क्रॉसर है यार Time now. Where is it? Time now. Aziz, अरे भाई ये कैसा गेम प्ले है यार मेरे को समझ में नहीं आता कभी कभी ये ईरान वाले चूतिया लोग हैं भाई यार अरब में भी जो ईरान वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल के चूतिए हैं Let's copy. this game fun as Short a kilo. Ah, sen de ye. Blah 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 blah. आपने पीसी बनाया हो कि लैपटॉप पे खेल रहे हो अभी भी लैपटॉप पे XP. Fuck. Hey. No, not No, XP. XP. Yes. Sorry. Sorry. B. वापस आ रहे क्या वो टीस्पोन पे उधर ही घूमता आउटसाइड भी Flashbang out. वही तरफ देखा था उसने पर आया नहीं आ गया Flashbang. Deploying flashbang. Incendiary out. हाँ एंटी सुसाइड That is outstanding. Hey, yellow. Yellow. What is it? The best of the Dude, best. are you fucking retarded? Fire in the hole. Fire in the hole. Incendiary. Oh, sorry. Nice. What was the question? I was fucking your mind. Dude, so try to find because you ain't. You're right on. You're right Oh on. no, man, that's my but my mom is. They're calling me next day. Can you please shut up? I see you are very skilled. Of course. Rush B. Sukablia. दोनों आवाज दो बार आ रही है मुझे चेंज किया क्या आपने माइक का पोजीशन केवल माइक वाली आवाज नहीं यार बाकी गेम की आवाज भी आ रही है क्या मतलब मैं तो स्पीकर पे खेल रहा हूँ ना हाँ गेम की आवाज आ रही है आ रही है हाँ, वो आती नहीं पता नहीं क्यों आ रही आती
Nice try, dude. Nice try, dude. Affirmative. Come on, let's go. Short time. Yes. One mid. अरे fuck यार मर जाना चाहिए था very low shot very low M4 पड़ी है लेफ्ट में I'm planted. उसका नाम है जॉन वीक अभी देखा है वो M4 नहीं उठाए भाई दोनों अपने प्लेयर्स ने M4 नहीं उठाए Come on, chill. Why don't you hear the Very good. Very nice. Too easy for me. Shit. You know what is meaning of wait मैं बाय देता हूँ I don't give a shit about it, dude. What? मैं देता हूँ भाई मेरे पास और को एक्स्ट्रा Come on, Geng. Come on. सेल कर दो अरे रिटर्न नहीं हो रहा है मैंने एक गोली चला ली उसके बाद रिटर्न नहीं करता है फक Oh, rush there. एक और होगा टॉप मिड शायद एक मिड एक भी वो शॉट मारा यार यार स्लो है यार ये समझ इसको इन्होंने नर्फ किया था तब से नर्फ ही चल रही है जब नर्फ किया था तब तो मतलब अनप्लेएबल हो गया था मेरे लिए इमेजिन हाँ अपने तो होगा ही होगा एक्चुअली काफी प्रो सीन में भी यूज होना चालू हो गया था वो गन बहुत ज्यादा एकदम और उसके पहले मतलब वैसी ही थी पर अचानक से जब पैसे कम तो ओपी हो गई कोई यूज ही नहीं करता था यानी कोई रीजन नहीं था कि पीपल यूज इट ओवर एके या Why don't you M4 go? Why you play? Can you shut the fuck up, please? Cover me while I plant. कितना भी बोलो आई मीन ट्रिक तो हो ही जाते हैं Plant. Oh, he died. How you can die? Bitch, please shut up. What is अरे आज मैं तुम्हारी भी स्ट्रीम में देखूंगा एक्चुअली आवाज कैसी लगती है दूसरे एंड पे देखना Let's go mid to B. We will make them regret. Do you have OnlyFans? Do you have only fans? Hey, whatever the fuck your name is, shut the fuck up. Okay. No. Why you touch नाइस It's not normal. It's not normal. Dude, can you talk less and play more? I'm planting the bomb. No. I'm here because I want to play fun. I want to play serious. I go play serious. I couldn't care less, dude. What? Do I look like I can? I can 1v1 your whole family. I don't care. My CS:GO play time is more than Rage. Agreed. Cocksucker. I don't care to.
Piece of shit. I agree. Piece of shit. A side. Down. Good game, guys. Well played. Hope I don't use you again in my life. Oh, you did. See you later. You moron. चलो मैं जाता हूँ ना Go, भालो. go fight yourself. Okay. कॉम्पी लगाओ। हाँ कॉम्पी खेलेंगे ना. अरे 5 मिनट में ना क्लोव का रिवील है। वो तो आ चुका ना रिवील. नहीं, एक्चुअल एबिलिटीज कैसे काम करती है, काइडे वगैरह खेलने वाले। ओके तो तेरे को अपन एक कॉम्पी नहीं गेम खेलना खेले। है. क्या बोला? तो तुझे कॉम्पी नहीं खेलना है ऐसा बोल रहा है क्या? हाँ, एक बार वॉच पार्टी में ही देख लेंगे और फिर कॉम्पी खेलते हैं। ठीक है. चलेगा कि अभी लगा है? नहीं चलेगा वो कुछ भी चलेगा. नहीं. काइडे खेल रही है इस बार, मतलब वो नहीं, क्या क्या बोलते हैं, फाइनल मैच के पहले एक ऐसा ही मैच होता है नॉर्मल हेलो हेलो हेलो, फ्रेंडली सुनो मैच। ना। अरे मेरी बात सुनो, मैं आ रही हूँ। आप लोग का जब गेम खेलने का हो जाएगा तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, ठीक है? हेलो। अरे आप लोग खेलो टीम डेथ मैच, जब के मैच खेलोगे तब बुला लेना। अच्छा ठीक है। क्या लगाओ, टीडीएम लगाओ कि क्या लगाओ? हेलो। क्या गई है? वो बोली आ रही है थोड़ी देर में।
क्या लगाओ तब तक? रुक जा फिर, और क्या, इस वॉच पार्टी में देख लेंगे फिर, और क्या डिस्कॉर्ड पे। ठीक है। दो बार रिवाइव हो सकती रे, और मतलब मैं वही सोच रहा भाई, क्या कैसे होगा, मेरे को वो देखना है बस। मिशन आ तूने गया। देखा क्या? मिशन आ ट्रेलर देखा? गया। हाँ नहीं नहीं नहीं, मिशन आ गया। गरम करके दे। अरे फाइनल्स है क्या? हाँ फाइनल्स है। अबे इसको बहुत टाइम है, 10 मिनट बोल रहा है वो। हाँ तो ठीक छोड़, है आजा तो। कॉम्पी खेलते हैं। हाँ तुझे नटा तो वैसे डाल देता हूँ। मतलब मेरे को लगा आगे बस वो चालू ही करेगा मैच। देख कर स्टार्ट कर। अबे यार, आया दूसरा कौन सा? डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड।
off. Obviously, Gen G and Sentinels are waiting. This is when we want your thoughts. The MasterCard fan poll, QR card down below. चालू कर दे। Start, Hinata. Match found. देखो पता है 3 बार मतलब रिवाइव तो नहीं बोलूंगा बट 3 बार चांस मिलेगा न्यू एजेंट से। Okay. लेकिन वो खुद को ही रिवाइव कर सकती है ना, किसी और को नहीं ना। नहीं तो हीलिंग एबिलिटी है जैसा रेना का है ना, सेम हील एबिलिटी है। हील वो है ना, शायद से उसको 100 HP का शील्ड आ जाता है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ 100 HP या 150 HP सेल्फ रिवाइव है और मर भी गई तो भी स्मोक दे सकता। What? कितना ओपी है भाई है? नहीं उतना ओपी नहीं है कैसा मतलब। नहीं है भाई? तू मर गया और तू स्मोक कर पा रहा है तो कितना ओपी है? कैसे ओपी नहीं है भाई? तू वो कुछ स्पेक्टेट तो करके रहेगा उसका, तू कुछ तो स्पेक्टेट रहेगा। करके तू किस कहीं पे भी स्मोक कर पा रहा है तो ओपी हुआ ना। कुछ तो रहेगा मतलब इतना सिंपल नहीं रहेगा वो। बट फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है वो सेकेंडरी स्मोकर टाइप है। प्राइमरी स्मोकर ओमन या वाइपर ही रहेगा हमेशा, जैसे हार्बर है ना सेम। डुअल स्मोक्स खेलना पड़ेगा उस पर। और 2 ही स्मोक्स है उस पे जो आई थिंक एक टाइमर के बाद वापस आता है जैसे ओमन का है। My reflection is here. Do me a favor, cariño. Kill her. Reloading. Reloading. Target spotted B. Shock dart. Target spotted B. One enemy remaining. I don't die so easily. Spike spotted B. The enemy fears you, Reyna. You can use that. Can I get a drop? Reloading. Reloading. Take भाई क्यों नहीं कर रहे अपनी टीम पे भी बिल्ड करता हूँ।
Go, Omen, go. फिर मिट था क्या? हाँ एक हाँ मैं था मिड। This one. एक नंबर. Spike down B. One enemy remaining. Flawless. Impressive. You all are wonderful. Deep breaths, everyone. Your hearts are pounding. Come into the unknown. Side, side. Die. Get him. Shadows traveling. दो स्मोक में. Last player standing. Spike planted. Var försiktig. The battlefield changes with every... Impressive. Let's make our dance. बी The hunt begins. सारे यहीं पे सारे पांचों. Adios. Spike planted. Still in sight. Last player standing. Blind के left करना होगा. एक राइट में और One enemy remaining. ये देखो. गन चेंज कर लेंगे उसे ऊपर. Cover going out. Shadows traveling. 20 भाई. Make them regret their choice of profession. Right here. गरम हो रहा है शुगर से खाना. ये नहीं बस हो गया. Sensor tripped. Enemy spotted B. क्या? Target spotted B. नहीं. Spike planted. They will cower. Blind.
Where diffuse? Last player standing. What? कैसे दोनों नहीं को कैसे मारते हो उसने? Level heads until we're home, yes? Good. अरे रे भाई अल्ट घर लेके हुई? The rank is diamond and flat. Impressive. तेज होना चाहिए था अपने को. हाँ casually. Sensor drift. Pull them to their grave. Nothing there. वाइपर थी यहाँ पे मेरे को. Last player standing. अभी तक के होल्ड कर रही थी वो तब. Spike planted. मेरे पे पीक लेना ही बेकार है. Don't any of you forget that. अगर स्मोक करके उसमें शॉटगन लेके बैठ जाने का खुद के स्मोक. ये आई नहीं रहा यार वो लोग पसंद रीजन. एक ही बार आए थे शायद. Over there. फिर से ये आए. Enemy spotted A. Target enemy spotted A. ऐसे Impressive. इतने सारे थे. ठीक था कि You यार, will क्या not कर रहा हूँ मैं? kill my allies. Got one. Get out of नाइस नहीं था. पीछे पीछे है पीछे है. 120 रहना. कुछ भी. Spike down mid. Spike spotted mid. Last player standing. ऑपरेटर कौन दिया है उसको? खड़ा क्यों था भाई वो वहाँ पे? They're going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. Let's remind them who we are. I could use a drop. I am the hunter. भाई हार्ड स्कोप लेके बैठा है वो. शॉप चला रही भाई वो. मैं बी खेलता हूँ. Spike planted. ऑफर है उधर. My ult ready. ऑपरेटर सेव कर लो इसके. नहीं. One enemy remaining. मेनू. Cutting their vision. Out of charges. Enemy spotted. ये क्यों हाइड कर रहा भाई है? कवर तो दे उसको. Don't insult me. Reloading. वो वहाँ पे छुप के बैठ गया भाई. ऑपरेटर लो ऑपरेटर. अबे
वाइपर ऑफ बहुत अच्छा चला रही है भाई। मैं तो नहीं देख रहा, मैं हो गया मेरा। किल दो करना ऑफ होना उधर रोकने के लिए। अपना सेज नहीं है ना, अपनी गलती हो गई, सेज नहीं दिया। लाइक ये मैप के डिफॉल्ट एजेंट ही सेज है मेरे हिसाब से। मिड पुश। देख रहा हूँ अंदर घुस गया। 114। एक सेकंड आया हूँ। Spike planted. Scanning ahead. There they are. Shock dart. Last player standing. They think themselves are equals. वन डाला सरेंडर। कौन इतना बटहर्ट है? हेलो हाँ बोला। अपने में से डाला क्या किसी ने? नहीं ना। हिनाटा नहीं तूने डाली क्या? नहीं मिड पे एक स्मोक दे रहा हूँ। They will cover. See nothing. Reloading. Are mine. मारना Spike planted. बॉल टूटी क्या? वन राइट एक राइट है। One enemy remaining. करो अल्ट ले लो Thanks. Thank you. बी पे ऑफ लगाता हूँ मैं। मिड पे ऑफ लगा, हमेशा मिड पे पुश है। Right here. मेरा शॉट मिस हुआ ना तो मैं फिर बैक ऑफ कर लूंगा, मैं पिक नहीं करूंगा। मैं स्मोक दे दूंगा। मेरे हिसाब से ए में ही नहीं आएंगे क्योंकि वो राउंड हारे ना। हो सकता है। Get out of my way. आए ये है ना, साला लगा ही था मेरा। Spike down A. Welcome to my world. ऐसे तो अपने को हार सकते और क्या कर रहा है? अरे मैं इधर डब्बे के पीछे था लेकिन वो फिर भी मार दिया उसने। Last player standing. Spike down A. Deploying drone. क्यों कर रहा है ये सब? ये ड्रोन घर नहीं लेकर जा सकता ना वो। Scanning ahead. Perfect. वो डेडलॉक की वजह से ले नहीं पा रहे। अच्छा वहाँ पे होल्ड कर लिया होता, पता है क्या? रेरा जाके स्पाइक उठा के वापस भी आ जाएगी, प्लांट भी हो जाएगा अभी। One enemy remaining. 30 seconds left. Wait for your reveal and Spike reveal down the A. pit. कर बोलना उसको भाई को। डाल रिवील डाल। Revealing area. 10 seconds left.
राइट में यार Shock dart. जीत गया जीत गया Spike planted. नाइस वन यार बढ़िया खेला तो ऑफ है ना मेन पे यहाँ पे रुक ऑफ दे रुक दे A little recognition is भाई nice. पीछे राइट में Thank you. राइट ऊपर Last round before the switch. Buy the best gear before it's too late. अच्छा खेला लेकिन वो मोस्ट प्रोबब्ली बी आएंगे ए पे आए जेट आ गया अंदर Cutting their vision. Experiment complete. Deploying drone. टू गाइस आर साइड Planted. वो उसको भाई Stealing sight. Reloading. One enemy remaining. अननोन साइड वेल प्लेड भाई नाइस Reloading. Revealing area. Their spike is diffused. Watch them run. Switching sides. Impressive. Gear up. Stay safe. We're going back in. Hola. Hola. ये लोग आके चैट में एक्सक्लेमेशन मार्क और रैंक क्यों लिखते हैं मैंने बहुत बार देख लिया वो उससे ऑटोमेटिकली रैंक बताता है तेरा बॉट सेंसी ये बॉट कैसे रैंक डालते और हैं ये सब बॉट के कुछ ऐसा तुम जो मेरे प्रीमियम को नहीं होता पता है कैसे कॉन्फ़िग करते हैं बट होता है ये I will rip the light from them. देखता हूँ Sage 78 to Sage healed. One enemy remaining. Heaven है right. You were beautiful. होस्ट रखी थी ना नॉनसेंस कर रही मेरे को अरे डिस्कॉर्ड पे बहुत आवाज कम आ रहा तुम लोगों का I will survive them. बड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे राइट क्लिक कर और क्या कर सकते हैं Hola. Hola. Eyes up. तुम तू डीप फ्लैश करेगा फ्लैश लिया है नहीं किया Shadows traveling. स्मोक दे रहा हूँ In sight. Shadows traveling. मैं हेवन जा रहा हूँ Reloading. Spike planted. वन ऑन योर राइट सीटी Shock dart. पीछे आ जा पीछे आ जा पीछे आ जा Shock dart. एक खेलो One enemy remaining. पर ये Yes, sir. Impressive. नाइस Let them rot. इसका एस था अपनी प्लेयर You're का all more important than words on a brief. Look out for Sorry. each other. मुंह पे सॉरी है दिल में तो बहुत खुशी है बोली एस छीन ली यस है ना Hola. Hola. Reloading. Hi. Hola. Right here. Let's start this party. Revealing area.
चल चल जेट को जाने दे, जेट को जाने दे, जेट को जाने दे। दो लोग गए। Spike down B. भी आजा, भी आजा, पीछे आजा, पीछे आजा, रोटेट हो गया पूरा। आजा आजा, जल्दी आ, जल्दी आ। साचल मार के अंदर ले। Revealing area. Last player fuck standing. यार, 104 104। प्लांट तो ले लेता भाई, पैसे तो मिलते। Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. Multiple fingers. Need a drop. Need a drop. देना वैंडल। Need a drop. तो फील ही अलग है यार। Track them down. Yes. शील्ड बाय शील्ड। Scanning ahead. Found them. Take flight. Cover going. पकड़ो गए। Enemy My marked. ult went. ये यहाँ पे ऊपर ऊपर है ये। 3 लोग हैं। चलो उठा लो। रुका। Carrier down. Spike down B. Last player standing. पीछे आ गया। स्प्लिट खेलना पड़ेगा भाई, स्प्लिट खेलना पड़ेगा। 2 बंदे A, 3 बंदे B, हो गया। Check. Charges? Check. Brakes? No. Need a drop. Thanks. अरे B पे जाओ ना, 3 बंदे कम से कम है तो भाई डिस्ट्रैक्ट तो करो उनको एटलीस्ट। क्या फायदा उनको यहाँ पे आने का? For you, hermanita. रुक रुक। Oh my god. Spike down A. ओमन तो बीच आओ, वापस स्पाइक ले लेना। नहीं हो रहा। Shadows travel. Last player standing. I have the spike. ऐसा क्यों खेल रहे हैं यार अपन लोग? यार मैं तो खेल रहा हूँ। There's no need for the enemy to नहीं, मैं suffer. टीम की बात कर रहा हूँ। अपनी टीम में थोड़ा घुस क्यों नहीं पा रहा है? देना वैंडल। Need a drop. Thank you. वेल स्ट्रैटेजी नहीं है इसलिए। ये तो बोला ना कि बी जाओ, आवाज करो। वहाँ पे फिर ऑप्शन मर गया कोई। हाँ तो वही कह रहा हूँ, स्ट्रैटेजी नहीं। स्ट्रैटेजी है बट एग्जीक्यूशन खराब है। मैं आऊँ, आजा भाई। फिलहाल तो कॉम्प्लीमेंट। अरे उसने घुस गया वो, चलो पिक निकाला, वहाँ पे चलते ना। ए 2 मैन है, 2 मैन। कम। One enemy remaining. तेज मिड पे थी, प्लांट करो प्लांट। तेज मिड पे थी। उधर आ गई। पीछे देख। वो हेवन है। I'll send flowers. अपने को यार अभी पक्का नहीं पता इसके बाद खेलेंगे ना इसके बाद कि नहीं खेल रहा है। Who are we to disobey? खेलता? किनाटा कौन आ रहा है?
अरे ट्रंकी भी आ गया। नहीं हो जाएगा, आजा 5 हो जाएंगे। ट्रंकी के साथ अगर कोई नहीं मैं होता। रिवील लेता हूँ वहाँ पे, थोड़ी देर रुक जाओ बीबी, थोड़ी देर रुक जाओ। हेलो। ट्रंकी और है क्या? हाँ और एक बंदा है क्या? और एक बंदा, रुको देखता हूँ। नहीं मैं पूछ रहा हूँ मैं कि तेरे साथ है क्या और कोई? नहीं मैं अकेला हूँ। अरे नहीं नहीं छोड़, मुझे नेटा फ्लैश कर रहा हूँ। मैं एक डेथ मैच खेल रहा हूँ ना। हाँ उसका तोड़ो वो। नाइस यार, नाइस, वेरी नाइस। Target, nothing there. Planted. No more. Target spotted B. One enemy remaining. Scanning ahead. Reloading. वो मिस कर दिया यार जरा से। ऑफ ले पीछे पड़ी। Combat is a means to an end. Impressive. And we are the Need a drop. means. Thanks. मेरे को ये दे एक बार। क्या दूसरा क्या बोलते हैं? फैंटम। Need a drop. Thank you. Thank you. Reloading. पार्टी में वॉल मत तोड़ना नो। राइट में देखो। ये टू मैन है। देख रहा हूँ राइट। जेट जेट 108। जेट को मार सकता है मिड से जाके, वो बहुत लो है। आजा आजा आजा, ये पे आना यहाँ पे। Stealing sight. आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्लांट प्लांट भाई आ इधर बिया बिया। साइट मिल गई। तो वो प्लांट। सुबह ए खाली भाई बिया बोल रहा हूँ। दोनों यहाँ पे पीछे जा रहे हैं। अरे यार Last player standing. क्या थ्रो भाई, हट। भाई साथ में चल लेना सोवा। इजी साइट मिल गई थी, बस होल्ड करना था। हेवन वाले को निकाल लेना था इसने। बताओ भाई। माइनक्राफ्ट ट्राई करना है? Enemy remaining. नहीं भाई। Revealing area. Found them. Ult is ready. Do not hunt the hunter. क्लच कर दिया लेकिन 3 लोगों के मरने लायक क्लच नहीं था वो। हाँ दीदी ठीक है ना। हाँ Reloading. अरे संस्कार भी है ऑनलाइन। खेलता लगा है क्या अपने पे? Reloading. हम अभी 5 हो गए। संसार खेलेगा क्या अपना? उसका और एक ग्रुप है पूरा खेलने वाला। Revealing area. क्या होल्ड कर अभी है ना? तू वाटर्स देख एक बार हिनाटा। ये उनका बहुत लो है। वॉल कर दिया उसने, ठीक है। आजा आजा। मिड पे है ठीक है। ये यहाँ पे वाइपर मार दो। ऊपर बढ़ा। जेट मिड पे। Enemy spotted. One enemy remaining. जेट मिड पे थी यहाँ पे हेवन मेरे को दिखा। उसका एस है डेडलॉक का। ये से क्या? एस है लेकिन इसको लेना नहीं है शायद। आगे तो नहीं जा रहा। हेवन ही है भाई डेडलॉक। हेवन देख।
ओडिन ले लेना मेरे से, कोई उठाया मैंने, ये लोग ओडिन पे आ गए हैं। Match point. Spikes here. Thank you. Thank you. ये बी पे अनफेयर है क्या, पहला पिक इनको मिलना? इनको जैसे अपन लोग अटैकर्स है ना, तो अब बी हाँ लॉबी में अपने को फ्री पहले वो मिल जाता है ना, अपन फ्री स्कोप करके रह सकते हैं। हाँ हाँ, वो मतलब यार, लेकिन बी को रिटेक करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। भाई इनके पीक कर ही रहे वो लोग। 114 सेज वो पीछे से आएंगे, हर्ष कूदी पीछे है से वहां मतलब से। भाई उसको मारो, 120 मारा Spike जाए down A. क्या स्कोर है? और लास्ट राउंड है, नहीं लास्ट राउंड हम लोग के लिए। अरे भाई वो You disappoint me. अंदर जाएगा के को हुआ है। रोप से भी चले जाओ। एक भाई बंदा जेट ले लेंगे ना, और कोई दिक्कत नहीं है। ब्लाइंड देना राइट में, ऊपर स्मोक में बंदा है। स्मोक में राइट में एक है ना। राइट पे साउंड आ रहा है। हाँ है। दोनों साइड पे, भाई बी जाओ बी जाओ। बीजा 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 बीजा। दोनों साइड पे है। One enemy remaining. बी जा भाई बी जा। जा 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 बीजा बीजा। ये ए पे था। 30 seconds left. हाँ टाइम पास है भाई। हेवन है। Attackers win. Impressive. ये ट्रंकी आया था ना, ट्रंकी का क्या डेथ मैच में? इसको इनवाइट कर दो ना। इनवाइटेड। अरे कोई नहीं, पूनम चलता है यार। और ये था कि कॉम्पी था तो नहीं, अगर तेरा पहले से था तो बता दिया होता तो अपन अनरेटेड ही खेल लिया होता। हो गया क्या खत्म? हो गया खत्म ट्रंकी। एक तो वेट कर रहा है। अरे तेरे को मेन से आना है तो मेन से आ जा संस्कार। आलोक। मैं क्यों मीन से हूँ? भाई पागल है क्या? मैं पता आयरन 3 इतनी मुश्किल से पहुंचा था, तुमने भाई 2 मैच हरवा दिए सुबह। डायमंड लॉबी आएगा फालतू। भाई अपन ने अनरेटेड खेला अरे सुबह। अबे क्या चूतिया है यार तू भी। क्यों नहीं आ रहे वो लोग? क्या गांडू है भाई, मुझे क्यों वहां पे बुला दिया? मैं सोचा और क्या आप सबको लेके आओगे सोच रहा हूँ मैं। अरे तो अपन यहाँ पे 4 लोग हैं, तो तू बोल रहा है कि तू अकेला वहां पे रह के बाकी के चारों अरे यहाँ मैं बुलाएगा? कितने कितने बार भाई रिक्वेस्ट हीरो भेजा है अरे है मैं हमने कहीं तेरे को का। भेजे, हमने भेजे तुझे रिक्वेस्ट, तू तो पार्टी में था भी, तू उसके बाद फिर डिस्कनेक्ट करके चले गया। अरे तो मैं डेथ मैच चालू करा था ना इसलिए। मेरे भाई मैं जेट अपनी ले मौत लेने देना प्लीज। तू और कोई हीरो नहीं खेलता है क्या, और कोई एजेंट? हीरो तो हीरो अरे यार भाई, मैं और कोई हीरो नहीं खेलता। टोटा खेलता हूँ ना मैं, तो आदत है। ये स्मर्फ है कि सही में आयरन है? ये सही में आया तुमने। हम्म, अब ये डार्क डार्क जोक्स मारेगा। अच्छी भाई बात मैं है। तो सीधा सा बच्चा हूँ भाई, मैं किसी से कुछ फाल। आवाज से बच्चे तो नहीं लग रहे हो। भाई मैं बच्चा हूँ यार। पूछ भाई, इससे कितनी शरीफों वाली बातें करता हूँ मैं। फुल वल्गर भाई। बलगर। भाई तो वल्गर नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? शरीफों वाली बात।
और क्या भाई, ये तो बहुत शरीफ वाली बातें हैं। तो फिर गंदी बातें क्या है तेरे लिए, वो जानना है फिर। अब भाई चल ना, गंदी बात है भाई, तू मेरे दोस्तों से मिल कभी। भाई डर लगेगा भाई, मेरा सर्वर फोड़ दिया तूने तो। भाई मैं किसी को ऐसे फालतू में कुछ थोड़ी बोलता हूँ, पागल है क्या? अरे देखो सीधी बात है, कुछ चलता फिरता थोड़ी बोल देगा मुझे फालतू। तू खुद बता भाई, सुन, क्या नाम है तेरा? देखो कोई चलता फिरता आदमी कुछ भी कह देगा, तू सुन लेगा उसकी बात है? पहले तो पूछूंगा कि भाई क्या तकलीफ है, क्यों बोला, अगर कुछ बोला है तुमको तो। क्या, मैं तो भाई मार के पूछता हूँ क्या? वही तो बोल रहा हूँ, तरीके का फर्क है ना। गरम खून है भाई तेरा। भाई मेरा गर्म खून नहीं है। जिस दिन तू मान लेगा तेरा गरम खून है, उस दिन तेरे को समझ में आएगा कि हाँ सही में है। भाई मुझे सिर्फ ईगो इश्यूज है, मैं अगर गर्म खून नहीं हूँ, सिर्फ ईगो इश्यूज है। चलो एटलीस्ट एक चीज तो पता है। भाई मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि अपनी खामियों को मान लूं। गिरा हुआ की क्या बात होती है, नहीं, अगर तुमने अपनी खामी वाले, तुम गिर थोड़ी ना जा रहे हो। वही रहता है, हर एक भाई उसे परफेक्ट थोड़ी ना बेशर्मियत होता कहते है। हैं। बेशर्मी कैसे होता है भाई, नहीं नहीं, क्या उसे बोल रहा है भाई। बेशर्मियत। तू खुद ऐसे रुक जा, सुन सुन सुन। मान ले एक बारी को तूने किसी का रेप कर दिया, मान ले सिर्फ, ठीक है? हाँ अब तू हाँ। क्या दुनिया में कहेगा कि मैंने कर दिया? अरे तो देख, एक होता है क्राइम करना, और एक होता है गलत चीज। तू क्राइम की बात कर रहा है, दो चल चीजों को तो सुन, इंटर रुक जा। रिलेट कर रहा है गलत तो चीज फिर। ना, मैंने पूरे साल पढ़ा नहीं, मैंने पूरे साल पढ़ा नहीं। अब मैं क्या अपने घर वालों को ये बोलूं कि पूरे साल तो मैंने पढ़ा नहीं, क्या खाक नंबर आएंगे मेरे? ये हाँ बोलना बेशर्मियत भाई। होती है। मैं तो बोल देता था। हाँ बोल देना का ना फिर तो, अब भाई भाई तूने मैं तो, गलत तो किया है ना, तो उस चीज को एक्सेप्ट करने का भी वो होना चाहिए फिर। उसको बेशर्मियत थोड़ी ना बोलेंगे। अब तूने बकचोदी किया है तो किया है भाई, अब क्या कर सकते हैं, या तो धंधे पे बैठेगा इंसान। और तू बोल रहा है कि तू ये एज में इतना ईगो है, तो बड़ा होके क्या करेगा भाई। क्या है जी? भाई मेरे पापा को देखो तुम भाई। जीन्स में मतलब। छोटा है शायद, 11th 12th में ना, पीसीएम कर रहा था ना, कर रहा था। 11 12 में है तू? भाई अभी भी कर ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ अभी भी। तो भाई बच्चा मेरे है घर यार। वालों ने सीधा अभी बोल, बच्चा है। भाई मैं तुमसे डबल लंबा हूँ, अरे ठीक है? छह लंबा फुट दो होने इंच से का हूँ थोड़ा मैं। ना होता भाई। लंबा होने से थोड़ी कुछ होता है। Match found. भाई मेरे मेच्योरिटी भी तुमसे ज्यादा है। अच्छा ठीक है भाई। वो तो पता ही चल रहा है। तो पता चलता है, सही बात। मेच्योरिटी इंस्टा लॉकिंग जेट, 5 मैन पार्टी में। अब भाई वो तो मॉमी है भाई, वो तो क्रश है मेरी, क्रश है भाई। जेट भाई, लव ब्रो, खुला कह रहा जेट हूँ का मैं। फिगर अच्छा नहीं है भाई, पतली पतली सी है कि तो क्या होगा, मजा सुभाषिनी नहीं साहब आएगा। देख ले तू। मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसमें तो, उसमें तो बहुत मजा आएगा। तेरी वो समझ गया मैं, तेरी प्रेफरेंस समझ गया मैं तेरी। भाई ठीक है भाई। मेरे को डर लग रहा है प्लीज रेज करते करते स्क्रीन से निकल के ब्रिक मार देगा। स्मोक फेंकेगा ना वो, स्क्रीन के बाहर स्मोक आएगा। वाह भाई, मैं क्यों मारूंगा भाई किसी को, मैंने तो आज तक किसी को मारा ही नहीं। चैट में आ रहा है, मेच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज विनर विनर चिकन डिनर इज नॉट रियल सक्सेस। टिकटॉक वाला जोकर। किसने बोला? चूतिया बोल दिया। मेच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज इट इज द बेस्ट सक्सेस। देखो टिकटॉक वाला चूतिया बोल दिया। भाई मैं क्रिंज तो नहीं हूँ किसी भी हालत में, ठीक है? मेरे जोक्स भाई किसी भी मान हालत में रहे हैं। क्रिंज तो नहीं है। जो कौन बोला, किसी ने इसको बोला ही देखो, नहीं। सुबह इसने मुझे क्रिंज, नहीं नहीं, सुबह ये पता है मेरे जोक को समझा नहीं, डार्क जोक था कुछ, अरे ठीक तो है? डार्क था तो मैंने तो फिर उसका भाई इसको करेक्ट किया क्रिंज ना, कह रहा है। तो उसका करेक्शन किया, वो नहीं सुना तूने। मैंने भाई, वही तो प्रॉब्लम सुन है, सुन वो सुन वही तो सुन सुन, प्रॉब्लम है, लेट गो मैंने करना इसको लिखा सीख, था। लेट गो करना हाँ, सीखना, कि मैंने बोला कि हाँ, उसके बाद नहीं, यस,
मेरे से गलत वर्ड यूज हुआ, रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड बोला भी मैंने, तो वो चीज को तू पकड़ के बैठ जाएगा तो वो तो स्टुपिडिटी है ना। ऐसे मत बोल भाई, पता मैं रोऊंगा, पता है तेरी बात सुन के पूरे दिन रोऊंगा भाई मैं। मेरे को भाई बुरा लगा भाई, तेरे को अच्छा लगेगा अब मैं रोऊंगा भाई। रोना भाई थोड़ा सा, तेरे अंदर ईगो इतना है कि ना तू रोने भाई, भी नहीं वाला है। ना भाई, ये चीजें नहीं बोलनी होती। छोड़ो। आलू मैं खा बहुत गया डाउन टू भाई। अर्थ आदमी हूँ भाई, मैं बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हूँ। देखो मेरे तुम किल्स देखना भी, रुक जाओ, इतना डाउन टू अर्थ हूँ। आगे वाले को मारते ही नहीं। लड़कियों को कैसे कैसे सपने यस आते हैं भाई। खतरनाक खतरनाक सपने। भाई मुझे वो सपने आते हैं चॉकलेट के घर में रहने को। भाई मैं तो लड़की बच्चा हूँ बता अभी। रही है, तो लड़की बता रही है मेरे को सपना आया था कि देख मैं भाई, तो बोल ही नहीं सकता। और एक चीज आई चैट में, मेरे से पूछ मैं कितने आंसू रोकता हूँ जब आखिरी बंदा होके राउंड में आवाज आ रही है हंसने की। यार भाई ये तो मेरा सीन है भाई। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जिस दिन तुम ना हर चीज को हंसी में लेना चालू कर दोगे ना, उस दिन समझ लो तुम मेच्योर हो गए हो। कसम से बता रहा हूँ। अच्छा, ये एक बात करी तूने ये सिर्फ जिंदगी अच्छी, में हजार चीज चल रही हो ना। सिर्फ ये एक नहीं नहीं, मैच्योरिटी मैं वाली तुम्हें बात बता किया रहा हूँ ना तूने। भाई, मैं बहुत मैच्योर हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ। जो बंदा जो होता है ना उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर तू 6 फुट 2 इंच के दिखाने की चाह रहा है जब से, लाइक अपन हर हर दिन अपन ने ना वो सुना है। भाई वो फैक्ट है, तो फैक्ट है, वो तो फैक्ट फैक्ट है। को इतने बार बताने की क्या जरूरत है। भाई मेरे को अच्छा दिख लगता है लोगों को जलाना। डिंगू। भाई तुम मुझे आयरन आयरन बोलते हो, लड़कों से Iron- पूछो। वो दो सिंगुलैरिटी दो। क्या चलो सिंगुलैरिटी क्या होता है? क्यों ना? सिंगल तो मैं हुई, वो कैसे दे सकते हैं? सिंगुलैरिटी भाई सबको नहीं मिलती है। जिसको मिल आलोक जाती कहाँ है गया उसको भाई? भाई मेच्योरिटी भी मिल जाती है। आलोक आलोक अरे आलोक। छोड़ो भाई, तुम मेरे से मैच्योर बातें मत करो। आलोक भाई मैंने किल चुरा बढ़िया। ली, किल चुरा ली मैंने। मैंने एक दो गोली मारी बस। आलोक है क्या? आलोक की आवाज क्यों नहीं आ रही? नाइस वन भाई। भाई अपने आंसू छुपा रहा है वो। हिसाब बराबर है अब। डिफ्यूज करो। भाई मारो यार। अरे यार टॉप फ्रैग चला गया। स्पेक्टर बढ़िया क्या? स्पेक्टर बोल रहा हूँ मैं अभी। गोस्ट गोस्ट। नहीं भाई फैंटम मत खरीद सेकंड राउंड। ट्रंकी ये देना, मार्शल देना। स्पेक्टर खरीद, स्पेक्टर और हाफ शील्ड है। सामने वालों को ना गंदे के आ जाएगा। इतना हाई आईक्यू कैसे है भाई तेरा? कोई टिप्स? भाई कुछ नहीं, तेरे पास शील्ड नहीं आ रही थी बस, और कुछ नहीं। शील्ड के बिना बड़ी गन नहीं खेलना चाहिए। रियल लाइफ में, गेम में? दोनों है भाई, दोनों जगह पे। नहीं रियल लाइफ में तो नहीं होती कोई गलती। नाइस वन भाई। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ आपके पास। मेरे को भी चाहिए। एक ही को दे सकता हूँ। हील दे दे भाई। नहीं नहीं अब नहीं है, दे दिया अब नहीं है। हट जाओ भाई, मैं मार। अबे यार क्यों चुरा ली? हाँ सर उड़ के आया था मैं मारने के लिए इसको। कोई बात नहीं भाई। रिवर में वैंडल, सॉरी रिवर ऑफ। अबे स्किन से फर्क क्या पड़ता है? दो जगह बात मत कर ट्रंकी।
डबल डबल आवाज आ रहा वो नहीं है ना, वो जगह पे नहीं है ना वो। एक ही Discord जगह में- पे। हॉल पे भी Discord- बोल रहा है पार्टी में। अच्छा ऑल और पार्टी हो में गया यार मेरा। अबे तू आलोक तू कहाँ है भाई जब से? अरे तो छोड़ दो बस क्या? बस अरे मैं वो होगी मैच देख गलती। रहा था। ओके सुनना भाई, वो तोड़ देगा क्या पेड़ का? फिर बोला, अब बोलते सॉरी हैं। सॉरी। मिड पे है। मेरे को नहीं पता वो इधर चढ़ा है कि मिड एक स्मोक दे रहा हूँ। होल्ड करे। मैं किचन देख रहा हूँ। देख रहे हो ना? देख रहा हूँ। हाँ हाँ नीचे देख रहा हूँ। एक मिनट चुप हो जाओ। ये शायद से ये तो पता नहीं। हाँ, ये। भाई मैं फुट सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, बोले जा रहे हैं। हद है। ओ भाई पूरा एक बैकस्टैब होल्ड कर रहा है। भाई मैं सोच भी रहा हूँ, आवाज आ रही है थोड़ी सी, ये ट्रंकी का भाई माइक खुला रह जाता है। छोड़ दो दीवार वो। यो ही नटा। ट्रंकी भाई पुश टू टॉप कर ले यार। अबे रुक जा। इतनी तेरे को आवाज आ रही है क्या है? ऊपर है बीच में, ऊपर में शायद बीच में, ऊपर में अरे नहीं, ऊपर में। ओ, 3 बंदे शिफ्ट वॉक कर रहे थे। वो डाल तो तेरा, एक बंदे का वो शायद डाल, से एक वो फेंकने वाला छूट डाल। रहा था। ऊपर डाल, ऊपर उससे डाल हल्के उस पे। हल्के फुट आ रहे थे बस। ओह माय गॉड मम्मी यार। जो मैं ये खेल रहा हूँ। सेज अब ड्रिफ्ट मार के ऊपर चढ़ जा। ये होल्ड करना। इधर ऊपर, इधर ऊपर। हाँ देखा है। अरे क्या जरूरत है, अरे तू भी नहीं चढ़ पाया। हाँ भाई तूने वेट करा दी। क्या हो गया भाई? चढ़ गए तो क्या हो गया भाई? कुछ नहीं तुझे मैं हुआ बॉल कर भाई। रहा हूँ, हट 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 हट। भाई मैं वॉल कर दूंगा, मैं भी जेट हूँ भाई। बी है सारे जेट बी। से जी की बात है। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ बिच्चा, मैं आ रहा हूँ। खुदा कसम तेरा कुत्ता नहीं बनना दिया ना, तो मेरा नाम भी सैलमन भाई ने। Spike planted. यार और भी नहीं मिला। अरे कसम। हील ले ले। Healing you. One enemy remaining. नाइस। Don't. I work. भाई तू अपनी पीछे आवाज ऑफ है, देख के पीछे सही ऑफ कर। है, पीछे ऑफ, पीछे ऑफ। हाँ वही क्या है? वही थी वही। ऑफ कर दिया। वही 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 सेम सेम बट डिफरेंट। दियो विंडल दे। चलो छोड़। दे रहे हो क्या मेरे को ऑफ? नहीं नहीं मैं चला रहा हूँ, तेज मैं चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। पुश कर दे। क्या आगे क्या पुश करना है भाई? आ जा रहा हूँ। अच्छा मुझे लगा सेज को कह रहा है। Wall raised. Grenade. Turret down. Satchel out. Satchel out. गन नीचे गिरी क्या तेरी? आएंगे नहीं, ऊपर है, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। Enemy down. अबे यार 86 है रेज। वेरी ना नाइस। क्या मैं मरा हूँ यार। मेरे को गन चाहिए उसकी। नीचे वो फैंटम पड़ी है। उधर ही है वो लोग। मैं बी पे रहो क्या? हाँ होल्ड। रैप करूँ क्या? ये रहने दो। ना 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 रहने दे। कोई एक मरा तो कर देना। तो फिर मैं ना यहीं पर ना रुकूँ ना क्या? ना कोई दिक्कत। बी आ रहे, होल्ड कर, होल्ड कर। बी जा रहे, बी जा रहे, बी जा रहे। राइट। रोटेट कर रही है वापस से। सुन 30 seconds left. हिनाटा हिनाटा कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे मैं मरा हुआ हूँ जेट। Your duty is not over. देख ले पहले, खुले में रिवाइव मत किया कर भाई। My ult's ready. ये तो डरता क्यों है रे?
बहुत डरता है भाई। भाई मैं सिर्फ मौत से डरता हूँ। जिंदा हो गया ना अभी। 10 seconds left. इधर आ गए। ओह, पीछे जाएगा ना। Spike planted. One enemy remaining. लॉल। लमाओ मिड मिड मिड। लाइनअप है भाई। अबे इधर ही बैठा है भाई, जल्दी जा जल्दी जा। उसको मार दो पहले भाई। Last player standing. ए यार भाई मैं तो हरवा। लेफ्ट में भाई, लेफ्ट में लेफ्ट में। अबे जल्दी आ, टाइम नहीं है। स्मोक डाला और टैप कर। नहीं हो गया, फुट गया तो। This is nothing. Clutch. अरे यार सॉरी भाई। भाई पीछे में सब खेलते हैं इधर, बस रेगुलरली नहीं। हिनाटा मिड पे ही अलार्म बोर्ड वगैरह लगा ना तेरा। बी पे काम तो म्यूट पे वो शायद नो साउंड खेल रही है। हाँ भाई तू मेरे को ऐड कर ले भाई। तुम्हें नहीं लगता ट्रंकी बी जा। अब थोड़ा सा बोरिंग हो गया बीजे में। तो लॉकडाउन के टाइम पे सही था। Keep up. Barrier created. नाइस। मारी ना था। नाइस। लो कवर देना, गन लेने। इधर करना है। करने था। ले ले। Will not kill my allies. कहाँ पे? तो ये पे रेप किया। नाइस वन। वहीं पे Spike down. हिनाटा ए। One enemy remaining. चल मैं बेट बनता हूँ। भाई मेरे को मार रहा है। पीछे मैं बन गया बेट। बेट का नाम लिया और मैं मर गया। क्या यार हिनाटा? नुबड़े तू सामने सामने घूमेगा तो कैसे मारूंगी? लो है स्पाइक अपने पे। हाँ स्पाइक अपने पे। कहाँ पे? राइट पे। Spike is here. कब खेलते हो भाई? ये नहीं ऐसा है कि वो बहुत ही मूड हुआ कभी तो खेलते हैं। तू मेरे को मैसेज कर देना कभी, मैं फ्री आ जाऊंगा। अच्छा ट्रंकी फैंटम दे। Can I get a drop? Thanks. टॉप फ्रैग कर रही है भाई ना। ओ नजर लगा दिया भाई। अब वो गाली सुनना उसकी। नहीं अभी भी टॉप फ्रैग करना ही रहेगी। और नजर लगा दी। यार ना तो देखो पता है भाई ट्रंकी है भाई। इधर से भाई वो नहीं देखा जाता क्या? भाई तो तरक्की नहीं देखी जाती क्या भाई? खुद नजर है भाई। तरक्की नहीं देखी जा रही भाई। देख नहीं देखो मारी ना। देख मैं बोला ये देख भाई। मतलब तू ये कहना चाह रहा है उसकी कोई मेहनत नहीं है, ये कहना चाह रहा है तू? ऐसा तो नहीं भाई क्या मतलब है और तेरा? Enemy spotted B. अबे मैं क्या करता हूँ भाई? ओए हटिया मर जाएंगी। ठीक है बाहर डाल देना। भाई पहले के 2 राउंड में 3 किल निकाली थी, अभी तक 3 किल ही है। ट्रंकी तेरा वैंडल खरीद के दे, मेरे पे पैसे नहीं। और तुम मुझे फ्लैट 2 बोलते हो। शर्म है रेडिएंट तुम्हें? भाई रेडिएंट। पूरे मैच रेडिएंट ई स्पोर्ट। Are they asleep? मेरे को चढ़ा दो। जरूरत तो दे दो। हाँ मैं भेजता हूँ। एग्जॉटिक भाई आया तो था आज खेलने। दिखा नाइस वन। Spike down A. देख के ओ फक यार, हेड मिस हो गया। ये भाई मेरा माउस एक तो इतना टट्टी है ना, ये पता नहीं क्या डीले है इसमें।
मैं एबिलिटी शांत यूज रहे कर भाई, रहा हूँ, शांत आएगी। रहे, शांत रहे। Spike down A. वो स्पाइक लेके गया, स्पाइक लेके गया, स्पाइक लेके गया। अबे ये हो गया। बाइक लेके मेरे साथ टीवी मारती है। अरे उसको मार देना, वो मार सकती है उसको। भाग वहां से। ये इतना दूर कैसे वो आता तू है? मार्क्ड है ना, क्योंकि वो तू जब दौड़ाते ही चला टर्रेट लगा, टर्रेट लगा। हाँ लगा देता, स्पॉट कर लेगा वो। Alarm bot out. ए पे साउंड है। Face your fear. Bot coming back. Last player standing. अरे अरे 30 seconds मेरे left. को सेव लगा करेंगे, आने लो का एचपी है। सेव कर ले, सेव कर। सेव कर लो, लो एचपी है। Spike planted. क्लच भी कर सकती है ना, तो देख ले अब। भाई प्लीज मैं वॉल कर इस दिया। बार नजर मत लगाइयो। भाई ट्रंकी ने नजर लगाई है, पहले बता रहा हूँ। नहीं सेव कर ले। हाँ समोसा। नहीं नहीं ना। भाई ट्रंकी की गलती है, खुला कह रहा हूँ। ट्रंकी ने नजर लगाई है, देखो। कोई नहीं भाई, अब ट्रंकी kill नजर करेंगे। लगा रहा है भाई। अब फिर से टॉप फ्लैग आ जाएगी ना, तो अब फिर से टॉप फ्लैग। भाई कसम काली जबान है ये बंदा। अब फिर से टॉप फ्लैग। भाई एक बार बोल, तू मुझे बॉटम ट्रंकी फ्रैग करेगा? बीखे। तू बोल बोल, मुझे बोल एक बार कि तू बॉटम फ्रैग करेगा। भाई देख कैसे बातें कर रहा है मेरे साथ। ट्रंकी डिमोटिवेट बीखे। करता है, डिमोटिवेट करता है भाई ये मुझे। ट्रंकी इसकी आवाज वजह से नहीं आ रहा क्या? गेम नहीं बीखेल, हेलो। अब आई, आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले। बी बी बी। घुस गए पूरा। वो चालू कर दे तेरा, वो चालू कर देना। अरे मिड उसका चले जाता है ट्रंकी, अगर वो हिनाटा मिड नहीं खेलेगी तो उसका चले जाता है। कितने बार बोला तेरे को मिड खेल, बी खेल। अरे यार मैं सुना ही नहीं यार, Spike planted. सुना ही नहीं दिया। Be at peace. अरे भाई Duty is not over. चलो चलो, we got this. Healing. One enemy remaining. 3 down. नाइस वन। ये बॉक्स के राइट में, राइट में। Player standing. अरे यार राइट। Clutch. थोड़ा 1 सेकंड पहले बता देती ना। हो जाता। हाँ उसका थूक निकल रहा था वहां से नॉर्मल। नहीं, हमको नहीं पता था। ट्रंकी बी खेल। ये इस बार आ सकते हैं ना, 3 बंदे ही खेल। वो देख ट्रंकी ने उसको बुआरी लगा लगा के ऊपर आ गया। अब आप सबसे ऊपर हो यार। नहीं नहीं, लेकिन तू भी तो आया। एक आइडिया दूं, एक आइडिया देता हूँ। ट्रंकी एक राउंड ना पूरा चुप रह के खेल रही, देखते हैं फिर जीतते नहीं जीतते। ठीक है। मिड मिड। किचन गया, किचन गया। मिड है, मिड है। बी पे 2 बंदे। ये पे एक को मारा। फिर बोला ये किचन गया हिनाटा। किचन देख रहे हो क्या? कोई नहीं देख रहा किचन। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। -100 वाइपर, -100 है। नाइस। हील ले लेगा यार, सारे वही हैं अब डॉग तीनों। नहीं मुझे लगा कि सेज को रेफ करना Spike आएगा। planted. अबे यार रंग के अगले मैच ना पूरा राउंड पर रही हो, माइक ऑफ करके रही हो। एक बार देखते हैं One enemy तेरी remaining. काली जुबान है या नहीं है। Wonderful. ओडिन में क्या दिक्कत है भाई? ओडिन है ना बहुत ओवर पावरिंग करना है। मैं बोला बॉटम रैक, सही में बॉटम रैक कर रहा है। तो लेके बैठ जाओ तो भाई तेरी काली रोकना जुबान है भाई, मैं डिफिकल्ट कह है। रहा हूँ। Can I get a laughing as you use all my gear? ये यार कैसे? भाई मैं हेलो, मेरा तो समझ आता है ये ओमन मेरे साथ कैसे 3 किल पे है।
वो मैच देख अरे रहा मैं है मैच देख रहा हूँ। क्या मैच? किसका मैच मैच? देख रहा? वो फाइनल्स देख रहा ना। स्कोर क्या हुआ? अरे आज स्कोर क्या चल हुआ? रही है फाइनल्स? हाँ फाइनल चल। फाइनल 3 दिन पहले तो चालू हुआ। टेंशन। इसके बाद मैं भी अच्छा देखता हूँ। वैलोरेंट देख रहे हो? उसके बाद मैं भी देखूंगा। आईपीएल सोच रहा हूँ। आईपीएल देख रहा है फिर से कोई भी? ये क्या है? रैप करेगा वो। बताओ। You will not kill my allies. भाई इसको तुम Spike planted. ओमन है भाई मेरी लीग का तो। माय गॉड। ताकि एडिट करके घुसना। नहीं एचपी कम है उसके बाद। Reyna killed. One enemy remaining. सेज का है पीछे तो नहीं। नो अपने आप को ही डैमेज दे दिया। Placing alarm bot. कवर दे। बढ़िया पकड़ के रख बस। अरे टंकी। नाइस यार नाइस रीटेक भाई बढ़िया। You don't deserve my inventions. आईपीएल में मैच किसका है आज? Last round in नहीं the पता यार half. नहीं देखते शायद ही कोई देखता होगा। आईपीएल नहीं देखते? आईपीएल तो कौन देखता है यार आजकल। और PS वालों के अलावा कोई शूटर ही नहीं रहा खेलने के लिए अच्छा सा। सही बात है भाई। पबजी अच्छा है बट वो लाइक FPS नहीं है। पबजी अगर ऐसा होना था कि एमुलेटर पे चलता तो मजा आता। हाँ सेम भाई। क्योंकि जिसके पास देखो सही बताओ ना जिसके पास पीसी है लैपटॉप आ गया है ना वो नहीं खेलेगा कभी भी फोन गेम। सही बात है। बीएस है बी हार्ड। पीछे आया तो पीछे आया टंकी। Wonderful. तेज पहले तुम मर लो। नाइस अल्ट। Placing swamp grenade. उसकी अल्ट रोकना है बस। अल्ट को मत फुटने देना। वापस ही जाएंगे। बढ़िया। नाइस। वापस आ। चलो। हाँ Enemy spotted. अबे किधर से मारा? One enemy remaining. Spike down. B. नाइस वन ब्लेज। लेट्स गो। Switching sides. Wonderful. भाई मैं बॉटम फ्रैग नहीं कर रहा। Wonderful. अबे आलोक अगर मैं वॉच पार्टी बना सकता हूँ क्या इसमें? यानी कि अगर मैं बनाता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम होगी क्या स्ट्रीम पे? नहीं बहुत लोग वॉच पार्टी करते हैं। वो तो यार सारे जितने भी वैलोरेंट स्ट्रीमर्स है सारे वॉच पार्टी कर रहे हैं अभी। क्या होना देखो ट्रंक के क्लासिक। भाई वैसे एक बात बताओ जो ये लोग वॉच पार्टी करते हैं ये उनकी खुद की ऑडियंस तो बिल्ड कर नहीं रहे ये लोग। अरे वो तो करते रहते हैं। ऐसा समझ लो। नहीं मैं एक बात बताऊं जो लोग ये ऐसे करते हैं ना ये सब रिएक्शन वगैरह ये सब उनकी ऑडियंस उनकी खुद की होती नहीं है कभी सही बताऊं तो। सामने खुश किया। सॉरी नाटा मैंने मेरे को ब्लॉक करा। अबे और के ऊपर और रेज है सेज भाग गई साली। राइट क्लिक। ओह भाई नाइस ट्राई यार। वो नेट फुटने पे उसको लगना चाहिए था ना डैमेज। वही ना स्पॉट डेथ होना चाहिए था उसका। डेथ होना चाहिए था। तेरा कितना डैमेज पड़ा उसका? 55 बस। अरे यार Wonderful. सेव कर रहा हूँ मैं। Yes. I'm saving. सेव कर ले जेट। Turret out. अरे बाप वो रे। दो लोग हैं। भाई 22 है। अरे Fought well. नाइस रे। नाइस है। बॉल कहाँ है उसका? अबे उसने अपने लिए बॉल बना के दिया। ऊपर नहीं चढ़ पाया मैं।
भाई क्या कर रहा है ट्रंकी? बेचारा रो दिया होगा। गन मिली किसी को? बैकस्टेप है वाइपर। भाई ये वाला निकाल दो भाई, राउंड मजा आ गया। नाइस रे। रखी गन ले साइड पे। अबे नहीं, एमो थी तेरे पास, तू मार सकता था उसको यार। भाई कोई ना, बस एमो थी यार। अच्छी बात। वैंडल दे मेरे को। कहाँ है? तुमने मुझे लेने नहीं दिया यार पिछले मैच में। नहीं यार, नहीं लेते पिछले मैच में सेकंड मैं राउंड जब हारते हैं ना तो नहीं लेना चाहिए। जैसे अभी तेरे पास फुल बाई आ गया ना, अभी तू फैंटम विद शील्ड ले सकता, वैंडल विद शील्ड ले सकता। अगर तू राउंड जीता रहता तो बाई कर ले, ऐसा है। मनी मैनेजमेंट ब्रो। अरे यार सही में। वाइपर है बी। नाटा चल चल चल, कुछ करते साले को। हील चाहिए मेरे को, हील चाहिए। इधर ही आ, इधर आ। दो बंदे। आ रहा हूं मैं। आजा इधर से देख, इधर से देख। कहां पे? आजा आजा। 115 फेड 115। यहाँ प्लांट कर। प्लांट कर उधर, उसकी जगह पे प्लांट कर। आएगा फेड आएगा 115। अरे कहाँ जा रहा है? अरे यार पागल है क्या भाई? ये स्वम करने नेट पे। चल ठीक है। नाइस ना। फेड लो था, हील हो गया होगा। लेफ्ट में फेड है स्नोमैन पे। राइट से ऊपर आएंगी वो फेड। हाँ ओ भाई आपके जस्ट पीछे था। हाँ भाई मैंने देखा नहीं था, रियलाइज नहीं किया था वहाँ पे होगा। मैंने तो पता नहीं कैसे मार दिया, मुझे भी समझ में नहीं आया। मेरे पास पिछले राउंड फैंटम या वैंडल होती ना। बाय कर दो। सेव करने के बाद भी नहीं मिली तेरे को? ये ले इधर फेंका, भेज दे वो, भेज दे वो, भेज दे। ये ड्रॉप कर दिया मैंने, ड्रॉप कर दिया मैंने क्योंकि क्या ट्रेंड चल रहा है तुम्हारा? गेम्स भाई दे ले, इससे खेल तू और फिर देखते रहे किल्स। अब तेरे पास है, तू स्पाइक दे दे मेरे को, स्पाइक दे दे बस। डुअलिस्ट प्लांट करता है बट ठीक है, डुअलिस्ट नूब है। हील है क्या? हाँ है ना, है। रुक रुक हिनाटा, इधर पीछे पीछे हिनाटा, पीछे पीछे। प्लांट करना, प्लांट कर। पीछे से खेलो, ऊपर देख लेना बस। तू पीछे आ जा, अलार्म बॉट एक्टिवेट कर तेरा। पीछे का नहीं पता है ना कुछ। पता आ गया। नाइस ट्रेड रे, तगड़े हेड लग रहे हैं। नाइस ट्रेड, नाइस ट्रेड। 105 दिया था मैं उसको वाइपर को। One enemy remaining. ओमन देखा किसी ने क्या करा उसने? जहाँ पे ओमन का क्रॉस हेयर था ना, वहाँ पे उस बंदे ने टेलीपोर्ट मारा है। देखा नहीं मैंने। बेचारा उधर आराम से बैठा हुआ है क्रॉस हेयर करके, उसके हेड पे आके वो बंदा टेलीपोर्ट मार गया। और भाई ये इसने मुझे फिर बॉटम ट्रैक करवा दिया। क्या है ये? ओमन की गलती है। हाँ भाई, ओमन की वजह से तो ट्रंकी की गलती है। ट्रंकी की गलती है भाई। भाई तेरी जबान काली है भाई। अब तो किल कर ही नहीं पाएगा भाई एक भी। भाई तेरे मुंह में भी शक्कर ना भाई, मैं रुक गया। भाई मैं गन उठा रहा था। स्पाइक दे, स्पाइक दे, स्पाइक दे। ये ले, स्पाइक दे, स्पाइक दे। बैकस्टैब एक। चल चल चल, उसको मारते पीछे चलते हैं। बढ़िया बढ़िया, चल चल चल। ये हिल ले, हिल ले, हिल ले। ओमेन ओमेन आजा। रोटेट। चलो भागो 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 भागो।
मुझे स्पाइक दे, स्पाइक दे, स्पाइक दे, नहीं स्पाइक नहीं दे, नहीं स्पाइक दे, मैं प्लांट स्पाइक दे। अरे मैं अब करता मैं हूँ डैश प्लांट। करके जा रहा हूँ। अरे कुछ डैश नहीं करके होता, जा एक रहा हूँ। सेकंड से वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Placing swarm grenade. Placing swarm हट हट grenade. हट हट। Placing sentry. Light planted. Reloading. Area is clear. एक ऊपर है एक नीचे है। नेटा बॉल कर रहा हूँ। Wall raised. अरे यार एक One स्नोबॉल enemy remaining. ओ भाई साहब हेड तगड़े लग वो रहे हैं। राइट में था। हाँ किचन तरफ। हाँ अभी किचन बढ़िया। लेट्स गो। अब फिर बॉटम फ्रैग में। But not nice enough to die in. अब तूने तो बोला किल नहीं होगा, लेकिन किल हो गया भाई। किल हो गया भाई, देख। हाँ अब तू दो किल भी नहीं कर पाएगा अब तू। वो तो भाई पूरा राउंड, पूरा मैच में मैंने 2 किल करा एक मैच में। क्या कह रहा हूँ, राउंड में। तभी तो आयरन से नहीं निकल पा रहा है। भाई ये दिल पे लगी मेरे बात, पता है तेरे को। भाई Hello. ये बात मेरे दिल पे लगी है। मिड क्यों जा रहे हैं अपन? पता नहीं, ऐसे ही नाटक ही मैं भी चलेगा उसके पीछे पीछे। भाई मैं इनको देख के चला गया झुंड में। ये मार मार मार। Finished. वो फुल बोले मेरे को किल्स चाहिए। लाइनस रहती ना एकदम, बोले अब तो सबको काट खाऊंगी, वैसा है वो। ओ इधर सुन, मुझे बंद कर दे इसमें। मैसेज काय तू किधर बंद होना है? 120 है। मेरे को इसमें बंद कर दे भाई जहाँ स्वाम रहता Last player standing. अरे यार क्या बंदा है भाई। बॉल गलत हो गया भाई, बॉल गलत हो गया। भाई बंदे ने काम पूरा करा, आई रिस्पेक्ट देम। बंदा बोल रहा वॉल करके मारूंगा। ये बॉल सही हो जाती तो शायद से तू वहाँ पे मार लिया होता, उधर गैप रह गई। गलत हो गया भाई मैं कुछ नहीं मार सकता, मैं बस एक चीज मार सकता हूँ। Yes. भाई मैं सिर्फ एक चीज मार सकता हूँ, ताली। Wonderful. गंदी सोच तुम्हारी है। आप उससे लेते क्या स्पाइक? हाँ दो, लो स्पाइक दे। मिड टू बी ना। मेरे को देना, मेरे को अल्ट मिलेगा, अल्ट पॉइंट्स। अरे स्पाइक मिड लेके मत जा। भाई नहीं है, किल मत कर भाई, भाई नहीं है, ऐसे करेगा। और उठा रहा हूँ, कवर दो। रेज नहीं है ना? नहीं Barrier created. आराम से Light planted. पक क्या निकल नहीं पाया। अटक गया क्या भाई? अरे ब्लेज के पास में आया है क्या ओमेन? ऐसा लग रहा है ये अटक गया है, अटक गया है वो। मार्क दे। मारो। एंटी ए हो रहा था अपन से, यही घुसते हैं। हाँ यही हुआ है अपने साथ बार, उसके बाद सारे राउंड आ गए, पानी खत्म हो गया। येलो क्लियर करने के पहले प्लांट जा रहे थे भाई, कैसे होगा? नहीं उस येलो क्लियर कर रहा था ना इसने, ये ट्रंकी था ना वहाँ पे। अरे तो मैं क्लियर ही नहीं हुआ था, पहुंचने ही वाला था मैं बस येलो के पीछे। Placing alarm bot. सॉरी गाइस, मम्मी आ गई थी। No. दे मेरे को वैंडल दे ट्रंक। मैं घर वालों को बोल रखा है, मैंने पढ़ रहा हूँ, बट लॉक कर दे रूम। वो दिन वो सोवा दे सोवा। मेरा कुत्ता भी इधर रहता है। हाँ ठीक है। बैकस्टैब आता ही है, चिनाता तुम लगा। वो व्हाट्स, My ultimate. उसके थ्रू मार दिया भाई मैंने उसको। नाइस। पीछे बैकस्टैब देखो। अरे
पे भैंचो तू वहां पे तो क्लियर कर। एक बैकस्टैब है। तुम्हारा प्लांट नहीं है ना, कुछ तो अलग ही प्लांट है। प्लांट है। तुम्हारा प्लांट नहीं है, ठीक है? अंदर है। कहाँ डाल के? प्लांट है, प्लांट है। उधर टरेट लगा ऊपर हिनाटा। अरे बैक। रिलोड रिलोड, गोली नहीं है। One enemy पीछे remaining. लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में हिनाटा लेफ्ट में। हाँ इसकी वॉल के पीछे, वॉल के पीछे। मुझे भी बता दो भाई। भाई किसी ने मेरा शॉट देखा? हाँ देखा मैंने भी देखा। नाइस वन भाई। Match point. तुक्का था पर अच्छा था। तुक्का था पर अच्छा था। कसम से बता, तुक्का नहीं था भाई। मैं जेट खेल बाय कर भाई, बाय कर उसको। हमेशा जेट खेलता हूँ मैं। कुछ तो इज्जत दिखाओ भाई। तू बॉटम फ्रैग भी नहीं कर रहा है अब देख। वही तो भाई। मत बोल भाई प्लीज। Hello. ओमन तू डी निगफाई हो जाएगा अगर तूने ये क्या नाम है बॉटम फ्रैग करता रहा तो। स्पाइक दे जेट। उधर नीचे फेंक, नीचे फेंक। कहां पे? मुझे पीछे पीछे रहे, पीछे रहे। पीछे प्लांट कर रहा हूँ भाई यार। हाँ मरा है कोई रेफ करने लायक। मैं आगे जाके मर गया। -9। राइट मैं मरा हूं पर मुझे रिवाइव मत करियो। शायद नहीं कर पाऊंगा। माफ करो माफ करो। मेरे को कर सकता है पर मेरे को करियो मत। कवर कवर कवर। नाइस वन। Attackers win. Do not fight on grenade. भाई मजा आ गया। यार फ्लैट डायमंड में इतने नूबड़े कैसे आ रहे हैं सामने? आयरन की तरफ ना साथ तो ईलो मैच करके उसने एवरेज आउट करा। भाई यार तुम भाई यार ऐसे मत बोला करो। रैंक अप होगा भाई तेरा, रैंक अप होगा, डोंट वरी। अरे सामने सिल्वर और ब्रॉन्ज सिल्वर आए थे। तुम ऐसे तो बोला करो। वे नहीं यार, उनका तो बहुत ही खराब था यार। बहुत ही। इसलिए तो खेल पाए ना अपन लोग रैंक अप में। हाँ सही है। भाई उनका लोएस्ट मेरे उससे ज्यादा था, रैंक से ज्यादा। खेल रहे कि जा रहे? खाना खा के आता हूँ। मैं भी खाना खाता हूँ। चलो ठीक है। तो खाएंगे। बाय बाय। ट्विच पे होती है ना स्ट्रीम? कहाँ पे होती है आलोक? यूट्यूब पे बीसीटी। साथ में देख रहे होंगे तो मैं आता खाना लेके। चला दे गेम। नहीं खेल रहा अभी। नहीं खेल रहे? नहीं। तो स्ट्रीम पे लगा रहा है क्या? हाँ मैं देख रहा हूँ, स्ट्रीम पे लगाता हूँ। हाँ तो मैं खाना लेके आता हूँ। लगा दे इधर, मैं डिस्कॉर्ड पे रुकता हूँ। फाइनल्स है ना पक्का? फाइनल्स ही मैं देखने के लिए एफर्ट्स लगाऊंगा, वैसे इच्छा नहीं है। हाँ फाइनल्स है। बीसीटी टाइप कर ले, आ जाएगा। ये तो टाइम पास चल रहा है रे। एक देखने दे। 일단 저희가 팀 창단 अरे अभी वो खत्म हुआ ना फ्रेंडली मैच। अभी फाइनल चालू हुआ। अच्छा अभी फाइनल चालू होगा? हाँ अभी वो फ्रेंडली मैच चल रहा था। टीम इंटरनेशनल वर्सेस टीम स्पेन। वो नहीं क्या मेन इवेंट के पहले एक छोटा मैच रहता वैसा टाइप का था। अभी चालू होगा। ये लोग ट्रेलर प्ले कर रहे हैं। काइडे खेल रही थी इस पे, क्या बोलते हैं वो फ्रेंडली मैच में। और उसमें क्लोव दिखा रहे थे, क्लोव कैसे खेलते हैं। इसलिए मेरा ध्यान उस पे ही था। अरे क्लोव की एबिलिटीज बहुत ही मतलब अलग ही है। ओपी तो नहीं बोल सकता बट अलग है बहुत।
아직 잘 I'm just really grateful. May the best team win. लाइक मार दो सब। हाँ भाई लाइक कर दो। मैं देखता हूँ तब तक ये कैसे स्ट्रीम कर सकता हूँ। कोई नहीं यूट्यूब अरे हाँ तेरा तो कैम तो ये ब्राउजर भी नहीं है ना कैप्चर वीडियो कैम ठीक है मैं ऐसे करूँगा। लगा लेना ये हाँ वीडियो कर कैम है मेरे पास, लेकिन मैं उसको वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा होगा तो। तू कोई दूसरी भाषा में बोल रहा क्या? कौन? तेरा वो स्ट्रीम पॉज का म्यूजिक आ रहा है अभी। हाँ हटा दिया अभी ठीक है। नहीं अभी भी वही एक मिनट उसको लाइव करना। हाँ थोड़ा वो बदलता हूँ मैं, स्ट्रीम का नाम बदलता हूँ। कौन सी टीम की मैच है वो बता भाई, मेरे को तो वो भी नहीं पता। जेनजी वर्सेस सेंटिनल। जेनजी वर्सेस सेंटिनल। जेनजी एक्चुअली पहली एशियन टीम है जो फाइनल्स में आई फर्स्ट टाइम एवर, और फर्स्ट कोरियन टीम है जो मतलब एक्चुअली इंटरनेशनल में यहाँ तक मतलब वीसीटी खेली। इसके पहले कोई ऐसा मेजर नहीं था उधर टीम। कौन सी टीम है? जेन जी GEN? हाँ जेन GEN और कैपिटल G जेन जी और सेंटिनल। सेन लिख दो तो चलेगा ना? हाँ हाँ सेन भी का मतलब चैट जीपीटी से वो भी लिखाना पड़ेगा ना भाई। देखो वैसे स्ट्रीम दिख रहा है ना तुमको कि तुमको चैट जीपीटी दिख रहा है? हाँ चैट जीपीटी दिख रहा है, ब्राउजर दिख रहा है पूरा तेरा। चैट जीपीटी पे क्या कर रहा है? मैं उससे डिस्क्रिप्शन लिखवाता हूँ। हाँ अच्छा सिंपल है भाई, मेहनत नहीं करना पड़ता। डिस्कॉर्ड का है, डिस्कॉर्ड में ऐड करना पड़ेगा वो सब बॉट पर। ये सब कौन, ये कौन से चीनी चपाटे प्लेयर्स है क्या? कोरियंस है ओ भाई। इनका जो वॉच पार्टी है ना जो कोरिया में हो रहा भाई, वो लिटरली ऐसे गांव में वो घर नहीं रहते क्या एशियन एनिमे में अपन देखते हैं, उस टाइप के घर है उनके। उसमें उनके बूढ़े लोग वगैरह जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो सब मिलके देख रहे हैं। पता नहीं कितना समझता हूँ उनको, लेकिन देख रहे हैं भाई। काफी अच्छी टीम है रे जेनजी, मेरे को उतना मतलब पसंद नहीं है ये टीम, बट खेलती अच्छा। TRX को हराई इसने। Let's go. आजा आजा भाई आजा। अरे यार तेरा एक अलग डिस्कॉर्ड बना लो। अभी का मैं तो इतना ऐड कर सकता है बट बना दूसरे वाले पे आ जाओ ना, मेरे वाले पे। दूसरा वो वॉटसन था नहीं, इधर अपन लोग खेलते हैं बीच में।
determine who walks away as the inaugural champion of the season. Is it the America's #1 or the Pacific #1? We're ready for war. It's been over 1,000 days since Sentinels and Tens इधर ही चैट में in a ऊपर grand में final प्लीज stage at an international event. After grinding it out, finding opportunities for year after year, they've made it back. But they're up against Gen G, a team that has already made history. The first Korean team to make it to a grand finals and a chance ये to जो win the first स्ट्रीमर trophy लोग for रहते their हैं region. हाँ वो खुद का स्ट्रीम नहीं देखते होंगे कोई नहीं देखता है क्योंकि मेरे को खुद का आवाज आ रहा है स्ट्रीम पे बहुत awkward लग रहा है उसको वो कर सकता हूँ मैं डिस्कॉर्ड की आवाज बंद कर सकता हूँ मैं थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन हो सकता है लेकिन तेरी आवाज आएगी क्या उसमें नहीं तो किसी की नहीं आती नहीं battle between two teams that not only have crossed paths before, obviously, but for both of these squads, they're really trying to see where are the margins of victory, because neither team, I'm suspecting, is going to be giving anything up. But I'm really looking at that Breeze to be the tone setter of this game, just like what Sentinels did to Paper X yesterday on Lotus. I think the tone setter, but then you got to look towards split. वहाँ पे तो देख सकता है किसने कौन सा मैप पिक किया है This doesn't even feel front loaded for Gen G now. Can they ride on that previous victory once again? Kaplan did say that Sentinels were ready for anything. That give them Breeze, give them Icebox. They just want to play. They're trying to focus more on their own game today. हाँ टेंस है Same focus that Gen G said. हाँ रेड में टेंस है ना It's going to be brutal. Back to back BO5s. Game टेंस तेरा फेवरेट है ना हिनाटा Well, Gen G has had time to study their opponent. and भाई prepare वो for जॉन this. क्यूटी भी बढ़िया खेलता है इसमें नहीं लाइक इसमें फेवरेट्स कौन है मेरे लिए तो जॉन क्यूटी है और जेनजी में से टेक्सचर करके एक बंदा है ओके और फेवरेट टीम कौन सी है लाइक सबके लिए तो सब सेंटिनल्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं सेंटिनल काफी पुरानी टीम है ना हाँ हाँ काफी वेटरन्स है जेनजी मतलब फर्स्ट टाइम है उनके लिए सब कुछ और ये लोग प्रो भी नहीं है प्रो प्लेयर्स नहीं है ये लोग वो कुरुनामी नाइफ दिखा रहे हैं उसका अभी लोग सामने सामने बैठ के खेल रहे हैं व्हाट ये तो कॉल सुनाई दे देंगे ना लेकिन फिर तो नहीं सुनाई देते हेडफोन लगे है ना वो नॉइस कैंसलिंग लेकिन तू देखना हर एक प्रो मैं नहीं एटलीस्ट मैंने जितने भी देखा ना सब लोग वो इन ईयर वाले ईयरफोन्स यूज करते हैं हाँ तो इन ईयर अंदर लगे हैं और उसके ऊपर ये नॉइस कैंसलिंग लगे वही बोल रहा हूँ वो ज्यादा बेटर होते हैं साउंड के लिए क्योंकि अगर देखेगा तो जो कमेंटेटर है वो भी बोलते रहते हैं ना चीजें उससे भी समझ जाएगा तो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन है और अंदर वो छोटे वाले हेडफोन play the set structured retakes that they love to play. Sentinels, honestly, I feel like have a chance to kind of get dragged down into the chaos here by Gen G with this comp. It's going to be tough for them to take home Breeze now. Well, this is it. It's now time for the Madrid Grand Final. Let's go ahead and send it over to your casters. It's your boys, Fred and Sideshow. Thank you very much. Let's get this one started in the Madrid arena. What a stage that's been set up, man. The scintillating Sen City trying to pave that road for a bit of redemption, but they got the pride of Pacific on the other side, and a hell of an advantage waiting for them. That double map ban looks brutal. वो जो टकला बंदा है ना वो बहुत अच्छा कमेंटेटर है And it starts off here on Breeze. साइड शो नाम है उसका A rematch of our upper bracket finals, and this was the decider. Instead of फ्राइडे भी आई होंगी ना काइडे इसके पहले वाले मैच में आई थी टेन क्या खेल रहा है टेंस क्या खेल रहा है टेंस कियो कियो प्लेयर खेलता है बट कियो खेल रहा है इस बार हां वियर्ड पिक है उनका स्मोक नहीं है भाई तू देख रहा है That's an almost insurmountable advantage. Something that's got to be. एक के पास एस्ट्रा कौन है भाई उन पे तो दो स्मोक है जेनजी पे वाइपर और अस्त्रा हां इन पे क्या है सिर्फ वाइपर है बस वाइपर वो तो ओपी है वैसे देखा जाए तो और वाइपर की गांड भी अच्छी है बट सिंगल कंट्रोलर ये वाले मैप पे उतना प्रेफर्ड नहीं है भाई डबल कंट्रोलर होना ही चाहिए ब्रीज पे John QT just crouched behind this one, still flash. Molly coming through, Trip as well, and the counter play in order. There it is. Deleted him. Trip kill.
Never seen that one before, at least on the big stage. वो Here it जॉन is, क्यूटी though. है Slowed साइफर down पे. Gen G to a crawl. Okay. Lakia in through the back of the site though, and there's the response, the return of firepower. Zelsis बढ़िया pick up place those है pieces, वैसे. but already a site has been gained and granted. अबे Shot क्या dart खेलते kills. हैं भाई ये लोग? 2 इनका versus गेम 2. देख के ना ऐसा लगता है कि यार अपन बहुत चूतिया है. Have to return to grab this spike. Zekan's gone to make मैं तो the ट्राई play करता right जितने round. भी He's इनके got a sheriff स्ट्रैटेजी for हो long-range fights. अपने गेम प्ले में ट्राई करे. Quite as वो उसके लिए ना successful सबको as पता है क्या देखना Sassy's चाहिए. been यानी locked out सबको and अगर he's पता है ना कि क्या shut करना down. है. New to the big stage, so aware, but he's missed the timing. Just barely. From ranked to rookie to tier 1 stage to the chance to lift the Timing, trophy yeah. Caron. Looking like he might take that first contact dart. Supportive util, Sassy finding it difficult to really get himself into और रिवील का वेट कर रहा Zekan हूँ 5 walking सेकंड wide, रिवील. now the dart finally ready, clearing it. At least onto one position. भाई एक भी Time डिटेक्ट नहीं हुआ look भाई. and tick against the face from all of them. On top now, Sassy versus Lakia. Oh, bhai. Players against one another. It's Lakia who cleans it up for the pistol. And another one of those pistol rounds going the way of Gen G. The individual skill on this team is so high. ओ भाई गंदा फंसा वो ट्रिप में. You see this ridiculous opener for John Cutie. Clearly anticipating an A-split from coming through. Sentinels simply couldn't capitalize on it. Lakia, one of those players with a lot of focus on it. ये जो जनजी टीम है ना मतलब एकदम Open up global events in क्या? Valorant. वो कितना क्यूट है चश्मे वाला. At our most recent. अच्छा वो टेक्सचर है. भाई इसका फेवरेट प्लेयर. Looking like he wants that second shot of revenge. I mean, he's already अभी got the हिनाटा first का भी one नया in the फेवरेट bracket. प्लेयर. ऊपर कोरियन भी है. Chance to really knock them down and deep. Now there's a flash play here. तो लोग ने वैंडल खरीद लिया. कोरियन पसंद है क्या? What's happening on नहीं मुझे ऐसा लगता है हर लड़की को पसंद होता है. The push down holds. Yeah, down holes, trying to squeeze them now with the drone close quarters. Combat might be in order, but again, there's that long sight line, and teams finally coming through with the right clicks. Finally, left clicks getting it done. Shot does pulled out, maybe a bit frantic in terms of that approach. Sassy getting ahead of himself. Zelsis doesn't choose to peek his cranium out wide. Still going to be playing his life now. मतलब वैंडल वगैरह लेकर गए सेकंड राउंड. हाँ सेकंड राउंड वैंडल बाइक किया Going था. for a repush elbow, almost anticipating that Gen G would pick the timing to rotate, but they had to recover that spike and had to be cautious doing so. Has Tens read this play perfectly though? Guardian in Tens hand, already and the rest of Gen G are coming towards पोजीशन him. ले लिया. This be देख मैप something पे. here, and he's going to be hearing it. Again, the rumble of the footsteps. He tries to take the timing just before anybody was set up for it, and they run him down. All grouped up now. 3 players Munchkin taking that forward angle. What could have been a possibility now is just looking just more unlikely. Zelsis with the outlaw. Everybody dies in a single shot. It's a 1v3. ये टीम बहुत अच्छी है क्या? हाँ जनजी मतलब बहुत ही अच्छा खेली. So 3 players surviving. भाई जीजी भाई. ओ भाई. They are favored. ये ऐड हटेंगी नहीं क्या? The fuck? They've already played Sen on कौन सी ऐड है? They absolutely अभी trounced आएगी them. तुम्हारे में. That was a dismantling. One that had. अरे तू ट्विच पे क्यों देख रहा है? यूट्यूब पे देख. अरे वो YouTube पे मैं करूँगा ना मेरे को चांसेस लग रहा है कि वो हाँ वो वीडियो को वो कर देंगे कि मैं YouTube टर्म्स ऑफ सर्विस के पता नहीं कुछ वायलेशन ना हो जाए. अच्छा अच्छा ओके ओके. इसलिए क्रॉस प्लेटफॉर्म कर रहा है. From being able to get close to his Yoru ult, which is super effective to be able to get into these sites. Even the information alone, little jump up, Zekan. Yeah, he's pushed up deep here. Not too much to support him, not too much to trade him, but he sees it, hears it. There's the kill, collected onto Munchkin, but it's offset. Immediately onto the other side of the map. No fast pace increase here from Gen G. Happy to just play for that pick. ये सेकंड बंदा भी बहुत स्मार्ट है. And not prioritizing the orb on Meteor. जो Suspected they might to try to सेंटिनल्स का जेट है ना काफी बढ़िया खेलता है सेकंड. उसके कारण ही बहुत सारे मैचेस निकले. In the first 2 rounds to go for little explorations. नया प्लेयर है 10s के बाद वो मेन डुएलिस्ट है सेंटिनल का. Anticipating that this would be a re-hit. Just confident that John could hold down the other side. Just that though, massive map control that's been lost here for Sentinels. You can feel it just through the positioning of Sassy. He's having to watch halls in case that lurk comes through with 40 seconds left. Gen G now fully grouped up. Starting to hit into this side. The John QT is going to be sitting side by with his rifle. Might have to try and put a stop to this one, but it's difficult. A lot of adversaries to try and overcome here. Still not showing his hand. Dart. Potential there to set that one up, but finally a few shots fired and Rattle Texture's been creeping and crawling up onto the angle. Finally there and releases it. The trigger straight to the dome there. Sassy dropping into the back of the site. 2 left standing here for Sentinels.
ये ऐसा हेड पे पड़ता ना उनका Advantage position. Gotta watch that one though. तो मिली सेकंड में That's ये 8 कभी नहीं seconds टाइम left. लेता है. A round-winning play perhaps, but now a safe Nice ground position for second. Meteor tucked right behind the pillar. We'll be able to get the extension into the round, but can he survive the 1v2 already through? And second! वेरी नाइस Nasty work there. Zekken भाई 4 किल किया उसने. हाँ भाई in the upper बढ़िया bracket final when these two teams played against each other. But you can't keep Zekken down for long. What we saw him do to PaperX, he मेरे को ये नाइफ बहुत पसंद है एल्डर फ्लेम वाली जो है ना four of the maps. He was clearly the best player in the अच्छा server. हाँ ये काफी एक्सपेंसिव है ना. हाँ काफी As he एक्सपेंसिव है has been doing all year, but also finding his form and his footing on Jet. इसका ये भी आ गया अल्ट आ गया. The timing on the cloudburst dropping just giving him the perfect moment to deny the तो क्या क्रॉसर प्लेसमेंट भाई back of it as well. Enormous play. जो कांट फटी उसकी देखा क्या That Sen हाँ, are looking हाँ. to play this ये defense है Zekken aggressively. ये Not जो at the अभी है beginning of the round, not स्क्रीन trying पे. to force the fight, but looking for those mid-round timings to soak up. मोस्टली देखेगा ना तो जितने भी डुएलिस्ट होते हैं सारे यंग प्लेयर्स को ही देते हैं जो नए आते हैं ना और पुराने बाकी रोल्स में मूव होते हैं. Look at this. Drone into गरम elbow खून really होता makes it होगा. feel like Zekken could be pushing behind this. So everybody on Gen G scared. Instead, the double push coming down halls. Great distraction play from Sassy. Meteor though potentially getting some of that information over towards the one side with a nice blade storm. बट आई थिंक ये भी है कि Now a scurry and scatter, everybody running over towards that A side, seeing if they can at least reinforce Meteor's position. He's going to be tucked close. Can they get a double face going with Zekken updrafting? Instead, just choosing to face it. TP with a gate crash, not going to be baited out from that one. Still, Lack is also हाँ getting. मैं कह रहा था कि Late lurk play in that position. Meteor साइंटिफिकली एडवांटेज भी होता है यंग प्लेयर को डुएलिस्ट खेलने को. wide. Lack though कैसे? getting that kill and closing the door in front of him. No, given the info. Texture. उनको The emphasis placed on him. फास्ट Attached रिएक्शन side, रहता है getting कुछ the ball मिली lined on सेकंड्स half में onto the spike. Could be a big difference जितना यंग maker. है. Could be a massive one in fact. Gen G have got them surrounded on almost every single front right now, picking them apart. The threads unraveling. Leave it to just John QT, but again the time ticking away. It's just far too late for it. Gen G find themselves up nice and easy onto that. वो third. जरा से सब बच गया यार John not even able to secure the rifle, which could have made a huge difference for Sentinels. टेक्सचर भी काफी यंग है. Zekken तो 18 साल If he का had है. been able to keep it, perhaps they would have still been able to अरे buy into the next. CS2 में ना अभी एक नया प्लेयर है डोंग्स करके Fake like वो Zekken भाई pushing 16 one साल का direction, get the है pick और up. डोमिनेट कर रहा है भाई डोमिनेट हाँ मोस्टली यंग प्लेयर्स जो होते हैं उनको इस पे With his लगाते हैं. own and get the plan down. And he essentially did that just all on his own. And once you're in an after plan situation and Gen G are क्या walking बोलते all हैं over the एंट्री space, फ्रैगर बोलते हैं ना उनको. हाँ हाँ much हाँ more entry difficult to fragger. clean up. And हाँ Sen's एंट्री retake फ्रैगर protocols do not वही look होते हैं as good मोस्टली. here as on some of their other maps. Definitely tell it's a map that's just been, less तो क्या honed aggressive over peak time. भाई From Sentinels just missing a jump there. I mean, a deep dart, I believe, broken early. So Zekken didn't want to take the peak timing. So they're just holding down towards elbow for Gen G. अरे हाँ again. और एक चीज है Having to play ये this one जितने nice भी and एशियन slowly. कंट्रीज होते हैं ना भाई मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं चीजें तो काफी मुश्किल होता है इनके अगेंस्ट खेलना. लाइक ये पूरे वीडियो एनालाइज कर चुके होंगे इन लोगों ने सेंटिनल्स के. और सेंटिनल्स को जो खुद का बिहेवियर नहीं पता वो इनको पता है. Turning it, see if you can get a kill, but only to one tag, spotting out the positioning of Zelsis. Interesting usage of the ult, but with 50 seconds left now, Sander make their way and meander over towards that B side. Cosmic Divide will cut this one up nicely. Paul aimed for where John QD has been anchoring in previous rounds. And this composition has so many different ways of getting into B. The Jet and the Yoru, very difficult to deny, especially when you have so many smokes online. That pit did not cover the spike. Oh, and a lot of respect as well being showcased as well to a weaker buy of Sentinels, but Zekken, see what damage he can do here. Still with the rifle in his hand. They found the first one, but again, a lot to get through. It's murky territory, a blight onto the B site with that pit, but they really wrangled control of this one. They found Charon, but again, Munchkin is the player that needs to fall to really stand a chance into this one. Yes, it doesn't cover it. Texture alive and kicking, working his way around, but he's being found. Sassy drops him. And one player left to stand as Lakia crouched, cowering, fear in his heart. He cannot face them. A thrifty win for Sentinels. ओहो सेन काफी अच्छा खेला. That is a bizarre one to start us off with.
मैं पानी लेकर आ With रहा a हूँ. pit being invested as well, you think Gen G have just got that wrapped up. It's a gorgeous flash recon play that catches Meteor, but then there's just a lot of timing plays all around the spot. All of these Gen G players dying whilst looking the other way. Not being able to use the eco advantage that they had, and actually the pit there ended up hurting them. मैं खाना लेके आता Not something that's that replicable, but certainly one that Sen can take to the bank. They will be moving forwards now. Plenty of money left waiting, and a lot of equipment comes with it. Full weaponry. Zekken so damn aggressive now. Seems to have an inkling that maybe Karen's there, possibly from a cam aggressively getting broken. Yeah, for sure. John Cudy's cam got broken in that spot. Now he knows where Garon basically is. The rest of Gen G working their way up mid. One of the things that Sen said in their press conference was it was difficult playing against Gen G, hard to isolate your ones when they travel around in such a pack. But Gen G are running a 1-3-1 default here. Smoking it up, looking to take a little bit of mid. But Tens has gone walking all the way down halls here, getting good info for his team. That's fantastic info. He's going to be hearing the scurry of the footsteps from Munchkin, maybe even seeking to punish, but he's going to be calling this now for his team. Look at this. Sassy starts to go. Yeah, good maneuvers. All around the map, can really follow those sound cues and follow them well straight towards the B side, but it's going to be setting up for that B split. Out through tunnel. Tens has got to be careful here not to overflank. He just needs to play to contain. He grabs one, grabs two. And the heads will roll before that space gains, and guess what Gen G just sent? Rattling now all the way, man! The movement looking clean with it. Texture's got something to say still. Only one blade left. Rest of them finding it into the back wall, but there's the refresh and shut down. Traded time. Really, really quite low. Only 11 seconds left. It's going to be barely able to get onto the side, but Karen has to clear a little bit. He might just have some time spare, barely a second. And yes, we'll be able to get it here, but Sentinel surely don't let this one slip. A 1v3. Ooh, last second plant, right? Able to reposition slightly, and Tens is weak. Really weak. He's got so wide. Zelsis needs to be ready. Karon! The movement impeccable, the aim on top. And he's brought it to a 1v1. Yes, damage has been done, but this guy, from rank to superstardom all the way on the grand stage, he does not seem phased at all. Zekken to face him now. Again, slow walking onto the angle. The noise and information just being cut away entirely. It could just come down to chance. Cloudburst straight up into the air. Zekken defusing. Drops down. Fight taken at one. Karon! A menace to him. The scourge of Sentinels rips away the chances of that round. That's an absolutely monstrous, heartbreaking 1v3. And the aim and the precision is pretty natural. It's just, you do not see that with a Phantom on long range, on breeze, ripping off heads. Yes, the timing on the trade is not perfect. It's not a double swing from Sen, but they don't expect the guy to be holding that and winning that. Karon is just that guy. I mean, he just seems unshaken throughout this entire tournament, throughout all of मेरे को लग रहा है ये the जीतेंगे obstacles that you've thrown at the guy. हाँ ठीक है The entire team as well have just been मेरी persevering. कोरियन Sassy. टीम Gen G. He's gonna have a hell of a lot to deal with here. Drone gets all the info he's looking for. Possibly seeing multiple targets. तो फाइनल्स तक के आ गए पहली बार होके तो बड़ी बात है वो. Targets! They just cleave right through them. What a perfect counter to what Gen G were going for. Immaculate stuff from Sen. And still throughout all of this, they're looking to go aggressive in other places. Tens has gotten deep. He's going to be able to hear rotations. I think that's such a pivotal part of Sen playing in this finals. Gen G love to rotate around the map on their attack side and their defense side, getting people into good positions like that for info. Impeccable. Seems like a clear game plan, just disrespecting them. But also Sassy, really, the playmaker there. Of course. I thought he was going to get overwhelmed. You saw him get the tag onto Meteor, and I thought that Sen were going to get baited into the fact that there was only one there. Clearly, a better read than it appeared. The Hunter's Fury obliterated them. Few layers too. I mean, Celsius, the bodyguard, playing inside the smoke, making sure that there was no punish in sight when Sassy was ulting. Yeah. It's very solid stuff. And Gen G are just going to go for a save here. After Karon got them a 1v3 to start their economy flourishing, Sen making sure it dampens just slightly. I don't know whether they saw Zekken's operator this round.
they didn't really कोई interact पुश with भी it नहीं very कर रहा, much. सब हाँ अपनी जगह पे नहीं बैठा है भाई. बहुत सेफ खेलते हैं भाई I ये have a लोग. feeling that Gen G don't know that this is online. You can see he hasn't even shot a जबकि bullet. बी पूरा खाली था. ये तो उसके ट्रैक्स लगे हैं ना, इसलिए तो. Certainly be another twist in the tail as we head into the next. They're not revealing the hand that they have purchased. कौन That बोल one, रहा they है? may be able to Blaze drop आया ना money, at Blaze. least in the follow-up now. उसकी आवाज बहुत ही कम आ रही है. Yeah, here's that play before as well. I mean, It's so lovely, vulnerability as well. Yeah, especially with Playing it Zelsis throwing the snake bite. up. Real nice. Zekken is going to be here to try to receive this hit if it comes through A. He's taking a gander through double doors, at least looking like he wants to. Wall up. I feel like this is going to be so difficult when Meteor has his Yoru online. 5 tags though. 2 found. Deep control of mid. Now Karen is playing a really far back position here. Just seeking to contain. Oh my god. Against the wall. Could just be walking straight into it. Shot missed though. It's a jiggle. And guess what? The entirety of the site has been gained. Given up entirely here just from that dimensional drift. Out of it now. Meteor with the plant. And this is securing brutal. it for texture. This is brutal. You're going to end up having pulls on this. You've got people running, you know, Munchkin's got lineups that he can throw. Off-site post-plants buy time for post-plant lurks to come through, and this is the game plan for Gen G. Sen are not in a position to play this quickly. They have to clear so many areas and then put pressure so deep to punish Karen and Munchkin. Already the lineup sailing across. Dart not quite broken. Reveal onto multitudes of targets. Again, this all causing issues, and it is too much to overcome. Too much to clear. Ults are being rattled off here. Texture from the high ground, eventually traded, and now the flash. Pop flash round the corner. Tens. It was all dodge. Meteor. Massive play. Second sticking inside the cage. Broken. Oh, last bullet. And dropped. Gen G finding that fifth, but you're right, Josh. It all began just how long it took Sen to really get their ground, get started onto the retake. Frankly, the push into main, I have no problems with. Ten's doing a great job, but how is Meteor turning this and still getting a double kill out of it? If you remember back to the defense side pistol that Sen ran on this map against Gen G, they flash peeked Zekken in, Meteor dodged it, got the kill. Crazy, bhai, crazy. Again. The Gen G players are so skilled and have demonstrated that all year. You think you haven't dead to rights, you simply do not. Slight edge being held now for Gen G. Rounds have been oscillating wildly back and forth. It follows the trends, it's Sen's turn. Gen G playing quite split up though, 2 players. Texture and Caron. A dynamic duo, been making waves. See if they can do any damage, at least focusing on that. That was a potential reclear being called there by Sen, and it does just go even. And no flash peek being used there, so that was just a dry double swing. 1 for 1. And Munchkin's wall not going to be available to them if they hit A, so that puts more pressure on Karen now. But he still has the ult to be able to work with, so not a major problem for Gen G. Aggressive Tens is holding this angle. Not a far back position, he wants to hold them before they can even get themselves into the choke. Locking it down, deep dart, potential setup. Waiting for the sound cue, doesn't get broken. Yeah, I think if that dart had been broken, he was looking to flash peek in there and make the play to win the round. The time is getting so low. If they can play in front of the Cosmic Divide, oh, Sassy goes down. Head rips clean off, dart through into the back Cosmic Divide. Gives him the perfect exit strategy here. Pop flash through, but Texture, he was aware of it. Facing away, or at least dodging it. And any chances for Sentinels into this round crumbled once more before our eyes. Again, Gen G in astounding control. Commanding position there. Having lost the Viper early on, to still be able to deal with that A-main aggression and come out on top is pretty excellent. Gen G, we're talking about the fact that their composition, honestly, they're happier with it on the attack side, or at least people expect them to do more on the attack side with this comp. And that was what blew us all away when Sen played against Gen G last. Now we're really seeing how comfortable they are in these spots. It doesn't all have to be fast execs with the Jet and the Yoru. Zelsis would love to keep the weaponry. Oh, no way. Flash through. He spotted Texture. Plenty more players. Oh. Texture spotted him. QT, last one left, slowly being hunted. Push back. अरे उनका execute कितना clean था यार. He's an adversary, so if they do keep at least one gun into the सारे round, एक साथ enter already हुए. you're looking at almost similar scenes here. Here's that opening when they try to re-clear out through. Discord आ रहा फोन से. Onto Munchkin, but the trade's still coming through.
The level of quality in terms of the rifling in this match is unbelievable. But we didn't get to see it in the upper bracket final between these two teams. Sen talked about, Kaplan in particular mentioned, the atmosphere was bad when they began that game, and they crumbled on split. It set the entirety of the series off on a bad note, and Sen, though they tried to recover it on Lotus, ended up going out in a flop. Now we are actually seeing Zek and Tens hitting really nice shots, bringing it to the Gen G players, making it more of a game that's about how they play the macro and how prepared Gen G are, rather than just running over them with the individualism. Because that's the first step, right? To conquer Gen G, you kind of just need to be matching them pound for pound with the aim. And man, how difficult that is, because Texture, Meteor, Karon are all up there with the best players in the world right now. In terms of form, they might be like all three in the top 5. I don't know who else you would put up there, because you watch Texture, Meteor, or Karon in a 1v1 against anybody else in this tournament, you have to favor them. Yeah, you do. I mean, they're just cerebral. The way they move, instinctual in nature, really. The way they tackle and handle a lot of those clutches, and just the aim and the movement on top of it. It's all there, perfect package for a lot of those players. So that is the first obstacle that Sen have to remove. Getting that confidence back, at least. Making moves now towards mid, though, here. Creeping once more and crawling. It's a kill trip, but with no one really to play off it here. More given up, so Meteor once more building up towards Dimensional Drift. On his way through, he'll be able to clear out most of this side as well. Basically the human drone, just spotting out these trips. Kill trip, lucky. Oh. Wait a second, John QT is there onto the angle in time. Gets the punish onto Lakia. Karon, a chance really for him to clean up, but no, the crosshair placement just wasn't expecting that one. The deep contact play and push out from Sentinels. One of the first times it feels like they're in a really advantaged situation. Yeah, definitely. They're realizing the fact that Karon and Munchkin are going to be playing in very passive positions. They found them both. They even isolate Munchkin, who's so far away. And yes, this has taken a lot of time, but it's set them up in a great situation to win the round. Chance of playing the lineups anymore for Munchkin. Meteor, Texture have to go absolutely massive, but he instantaneous there with the trade and shut down in time. So the Sentinels are willing to make it that repeat of what happened last time these two teams clashed here. That 4th one on the board, steadily, slowly but surely, chipping away, trying to make it at least even at the half. Look how John gets at it. It's after the kill trip came through, but it's this re-push, not looking to try to go for the retake at all, fully waiting to try to flush out Karon and Munchkin before they ever go towards site. It's a great adaptation. It shows that they understand how Gen G are playing the post plans. This is the kind of stuff that made Sentinel split so scary. You know, we'll forget about the last 2 times we played it. Yeah, I mean, they've had their confidence knocked there as well. You can tell that just from the way that the map veto ended up shaking out. Wasn't the first map that they ended up picking. Deep dive here, Texture want to take advantage of this one, but it's broken. Sassy using it. They did miss second. Hello, spots it. Up in the air. It's all about the reactions. Follow through there. Just a close, but a shorty. Defending the area and teammates flooding back in. All to his avail. Munchkin, though, has managed to get himself a gap into the A site, but the spike has been dropped down into the center of the mid, and it's all down to the individual plays. You can see Karon also thinking about the same thing here, and Munchkin. Full territory gain down into mid for Sen, but they need to keep their eye on almost every single angle here, and guess what? Plenty of backs facing away from them! Karon! It's majestic! And just like that, turned away, ripped away. What should have been a slam dunk, Sen left looking in every possible direction, barely able to get it, but they do in the end. Karon with another. One, another death blow, a dagger to the heart of Sen. Another round where Sen getting themselves into a hugely advantaged position, but because they played this specific style of using second as bait and everybody flooding through from tunnel and double doors to try to help, they gave up the sights, and Gen G are just too smart with it. They read it, they react so quickly and get into positions where their players can pull off magic like that. Final round, Zek and Glass Cannon Operator. You're watching here as he tries to take contact.
Dodging that initial wave of utility. There'll be too many targets. Now, once more, Brent. Sassy drones out through B main, making it feel like perhaps there's some level of aggression happening over there. They're trying to prompt the reactions out of Gen G. But this team is so smart. They wait for a full commitment before they decide to do stuff like that. And Munchkin's the playmaker actually here, making his way all the way up through halls. It's not a full commitment on the A split just yet. Not quite. Trying to make a play or get some info. He does like to take the initiative though. That player to watch for here, Meteor. Holding. Kibi's a util, potentially the flash there, I believe, in his hands, but thinking twice about it. And again, it's just pure silence. They're letting Sentinels stew, hoping that they make a mistake. No real reaction, though, from Sen. They're not going to get baited into defensive aggression. Now the drone at least should trigger that reaction with the knife. Down, cancels it! Reactions there from Zek, and repositions there with a dash, but might want another go. I think still with the door opened wide, he realizes it is back. It's open to two different directions, and he's really got to try and watch this one here, at least get some help from the rest of his team. Gen G are moving into the opposite side of the map. Yeah, they're going towards Zelsis, who's reinforced with John Cudy's utility. The players haven't budged, snared into space. Zelsis hearing that one broken, now wants to take the fight to him. Out wide, onto the wall here, Kieran. He's worked and wiggled his way into the back of the side again. Back to it, reload! Oh my! 7 seconds left with the spike drop down. Sentinel surely a favourite, and yes, indeed they are. No chances here in the final round of this first half. Not for Munchkin. So maybe, gotta think it's a better look for Sentinels here on Breeze. A much more competitive opening to this game on a map where most would write them off. Gen G dominated this map when the sides were flipped last time we saw it. He had great awareness, dodged the drone, used the knife to cancel it, punished the player coming in. There was a trip there onto Texture. He had to kind of adjust in mid-air, and Zelsis caught him, plucked him out the air like a butterfly. Absolutely insane stuff for the first half. Guess what? Plenty more left to go in Breeze. Let's send it down to the analyst desk to discuss everything so far. Thank you so much. Wow, what a way to start things off. But let's just jump right into it. Our Verizon high-speed moment of the match came in the first half. We had multiple, as a matter of fact. It was kind of, you know, your choice, pick of the litter here, Hypoc, because Zekin, this kid's putting on a show today. Yeah, I mean, just looks so clean time and time again in these high-pressure scenarios as well. Last alive here, like back against the wall to try and find a bailout round to really try and recover this. We're so used to seeing him now in this scenario. Yeah. And it's ridiculous because this guy just turned 19 in his first international final. He had that birthday while he was here in Spain, and the journey for this guy has been long. When we first saw him internationally, he was only 17 years old, playing with Exit on stage. At the time I talked to, his parents were there with him, going along to Istanbul, but they've been with him the whole way. This is a picture from Americas of his grandma out with him, supporting in the crowd. He's a young guy, but he's had his family all the way behind him throughout his journey here in Valorant, and now he's at a point where he's in an international final and really in that discussion for best player in the world. Yeah, what's so impressive here about Zekin is just not only does he carry himself like an absolute pro, but the man is just so meticulous in the server, Hypoc, but he's going to need to continue to output more if this team wants to get back into it. Yeah, definitely. I mean, Josh was leaning on this in the cast as well. You've got people on the other side, Texture and Meteor to really overcome. Karen obviously being the clutch master on that controller role. Zekin's definitely going to have his hands full today if he wants to continue frontline versus this Gen G roster. Gen G's post plan's got them a great half here, but their comp also excels in the retakes. They have a lot of util to bully Sentinels out. Gen G looking strong in this first map. Yeah, it's going to be very, very difficult here for Sentinels, and for Gen G, hey, it ain't going to be a walk in the park either. I'm expecting some fireworks in this second half. Let's send it back over to Brennan Sideshow. The pistol round is where it really needs to start here for Sentinels. I mean, we've already been highlighting the real importance of it. Gen G winning, was it 6 out of 6 when they last played each other? So now 7 out of 7. And heading into the 8th, Sen need to be able to get some of those online. And this is the half where we saw Sen have no success. Kaplan said that they came in with an anti-strat that they thought would work, but called it wishful thinking in hindsight. Oh, wait, is Meteor just taking that fight straight up? Good punish, though. A lot of damage. Yeah, it's not the kill, but they forced that back. Denied Gen G a little bit of space. And now this drone's really going to make it feel like it's a commitment into B. Instead, the spike is going in the completely opposite direction. I think this is looking more like an A-split where you rely on the fact that Zekin has holes control. Gen G, they do play to those sound cues. Oh my, just missing a chance and the timing there for Tens, but with the orb now bloomed and blossomed, can start to get a move onto the A side still. It's Kieran.
It's locked down into the corner position. Guess what? Zekken punishing the rotation, and 3 heads roll. Down and out here. Karon blinded as anything. Cannot win his fight out. Zekken, they're chanting for it. You can feel it. The roar of the crowd behind him. And he knows what they want. Ten spots him. Munchkin spotted. Ow! Wow! Denied, but that is the first pistol that Sen have put on the board in the rivalry that's blossoming between these two teams. And what a fantastic attack side strat that is. So much better against Gen G than what they were pulling out in the 3rd map of the upper bracket final. They call a fake, they use the advantage of having map control, they use holes against a team that has a solo initiator. It just ticks every single box to me. Learning from the failures of before. Of how rotate-heavy Gen G play, I mean, maybe a bit of fakes and finesse might be just exactly what Sentinels ordered. Clearly doing that prep work here. Now the orbs can be farmed up, granted for them, without too much pushback. Of course, got to be aware there's always a chance that they could fight back. There's a slight bit of danger in this round, Bren, because Meteor managed timing the recon dart that Sassy threw into mid, I believe. So they have no idea that Meteor is positioned this deep, but no one on Sen looks like they want to get into that area at all. Sen running a default looking a little more like when Loud played against Gen G, not going for the early round group ups in A main, but happily now grouping up together to make sure that they can trade out the lower eco players. And like I said, I don't think they realize that Meteor is this deep. Meteor going for walkabouts to face early on. John surely hearing this one now, facing him, but it's too much to overcome there. Meteor with that Sheriff, and again, a bit of stray damage through Tens. Just trying to at least lock this one down into the side of the... He missed it! Oh, but they have found him. Right-click bundle, diff, apparently so. 3 players still left to stand here for Meteor. Find that one, maybe could be a chance, but it does go down in the end. Traded with the nade, flushed out wide, and found in the end. There it is. It is a conversion for Sen. It looked a little difficult to be able to get across the line. It's always going to be tough when Gen G have smokes that you have to play around. They're flashing into the smoke here to blind Karon. Clearly they have a good understanding of how Karon's going to be playing. I think one of the key antis that they came into the last time on Breeze was that knifing Karon so that he can't use pulls. They thought that would give them easy access to the A site. In fact, Gen G have way more layers to it than that, but you can start to see Sen looking to break them down. And now coming into a bonus round. Do we have another great strategy called here by the brain trust of John and Kaplan? And Drew as well. I should give credit to my kilt-wearing neighbor from the north. You certainly should, yeah. Takes a village, after all. But it has been evened up in terms of that scoreline, 7-2-7. And like you said, the bonus round is where Sentinels will look to see if they can get over that hurdle here. Texture, Toast, okay. Not going to be able to play anti towards that one. And everybody playing inside this cloud. Burst, not expecting him. He pounces up. Already just locks that one down. These Sentinel players are left scrambling and wondering exactly where these players are coming from. Texture now with the dash. Smoke to play in 4-10s here, but how do you really overcome this? You just can't. It's just raw mechanical prowess on display. And an easy one is what it feels like here for Gen G, overcoming all sorts of obstacles that were thrown at them. And I think that's an example of what was going wrong for Sen last time. Gen G are just so good when it comes to defending the standard hits. And this is a very standard A split that Sentinels send in. Gen G's crossfires are amazing. Karon can always play around Pyramid because he has smokes to dip and dive inside of. And then you have Lakia up towards stairs, Texture in that gutter. They've always got triangles going on that are extraordinarily difficult to break. The weakness with Gen G's defense is to do with Lakia and him being overstretched, having to run around halls, yeah, jump a spot nest. heard. Real opportunity for Zekken to get that punishment. You are right, it is that weakness. That's why they have to put bodies into it. But now a double walk up and face. Zekken got to be ready for this one here. Is it going to be cleared? It's an off angle. Lakia in the crosshair, precisely on exactly where it needed to be.
Yeah, great reclear. Gen G are going to go for those occasionally because that is the weakness of their composition, and they need to make sure that they have info in that area of the map. Meteor going for an info peek when they're up 5v4. Everybody's got their backs turned to every possible position. Texture, though, seems to be more aware of it than he is. Shuts down John QT. Sassy out in the open. Done into the back of the site, and it is traded and cleaned up by 10 still. Only 2 to left stand here for Sentinels. We'll get control of the B side and the plan online. But even more so, to try and overcome Texture, Lakia and Charon taking their time with it. They know that Zelsis does not have the orb on the spike. They can see that over towards mid. So he's probably not playing post plants, probably on site with 10s. All up. Reclear. Just feeling unsafe, but they do take control of main once more. They can play this post plant from this position still. Smokes are available. Black, at least Charon puts that one up, but a kill found still. It's down to just 10s. He's got to do it all. Does have a nade, but still he's got to deal with this. And what a play to make. Texture so damn aware, but there's the shot still. Will the nade land in time? Lakia's sticking. Half spam damage! He's just about got it! Unbelievable from 10s. That is cold! That split-second decision to pull out the fragment grenade and make sure that you have additional damage. What a 1v3! That's on a knife's edge though, isn't it? Look at it. One enemy remaining. But my God, look at it slow down. Oh, very, very close. He's drawn the game back 8-8, where Sen actually have the economy advantage, putting together much better rounds, using more of the map. And Gen G, even though they're finding advantages, letting that one slip away. This time, Munchkin going wandering, tucking underneath where John Cuty's playing. This is always a dangerous spot. It's obviously a risk. If the player on window checks, you're just 100% dead. But taking a risk on a round like this where you have lower economy is absolutely worthwhile. Oh yeah, it's the time to do it. And of course, he will be able to hear rotates if they go heavy towards B. And he'll hear them early enough to call those defensive positions. Back here with the Bucky. I think he's going to be going for a peek here. Still wants to hold that close angle. The dart broken, it's going to be pulling players actually. Reaction out of Gen G, thinking that, okay, well, his presence there, but now the drone adds another level to it. A bit of confusion into the camp for Gen G, wondering where the hell are these players landing with only 40 seconds left. Time could start to become a problem, but Texture, he was the real danger in this round, at least with those knives, and with him shut down, now it opens wide, but Munchkin immediately there. No command sent, flying Bucky, gaming! Lakia dropping 10 straight down to it. Removes him from the fight, aiming control. Granted and gained, tucks it up and doubles up. Now with the drone over, an attempt to punish Charon, running and gunning. Zelsis time, 12 seconds left. He needs to find this kill, but the rifle has been handed over, and so is the spike. John QT, head on a swivel. Too much to deal with, too much to overcome, and surrounded, man, surrounded. That's the value of Gen G taking risks. I'm telling you, Munchkin tucking into that spot. You won't see him do it often on a rifle round, but what a timing to do it. And Lakia, he gets the perfect glimpse of 10s right before that. But also, they had no idea that Charon had already pushed down through halls and was in this position. 10s is coming that there's only one person in A main there for sure, because they just had no clue that the Astra was also ready, holding Lakia's back during the drone. And just like that, all of 10's good work in the 1v3 undone in a moment. Right back at it with the economical disadvantage. And from watching Gen G, they love using Meteor's ult to help them defend sites. It might seem weird using the Oro ult. That means there's another player that can't. Oh, hello. Huge pick. Against his adversary as well. The Nemesis on the other side of things. A clear win con is that Zekken can shut down Texture as a player. It's a fast reaction going to be called here with a neural theft. Gives him a lot of information. Hunter's Fury. Sassy's hoping that he can at least set this one up. Meteor out wide here with a dimensional drift. He was hoping for a chance to really get that punish onto Sassy, but it's all cancelled in time, and now the rest of his team flooding in. Munchkin spots it, just the shoulder, and finally the kill. Straight to the dome, a wider peak indeed, but it's going to be face down and sprayed through entirely. 10s finally deals with him. The pesky intruder to a site that should have been theirs, and Lakia is out wide, firing that util. A pull already going to be used and utilised, but 3 players left standing now for Gen G. Meteor already in position.
A 1v2 for Zelsis. Doesn't know where they are. Wall up, reposition spots. Karen, splash. Blinded himself. Karen with the follow-up. Gen.G bailing themselves out of a rough spot there. But I think one of the key problems is that when Sentinels got in position to try to hit the B site, I believe Zeken's waiting for another piece of utility there. He's just delaying, waiting to peek at the right time and sets up Munchkin for the triple kill. If they had been able to move a little faster, had that set up a little quicker, Munchkin probably ends up just going something like 1-for-1. Sen are in a much better spot. Nevertheless, that was an eco round for them. We come in 8-10. Rifles again online. And Sen on an eco swing round with big ults for Gen.G. Massive ults. So far this map, I mean, it's just been a tenuous tightrope walk, hasn't it? Either side, just Thrifty's making it nice and even, a potential chance, but overall Gen.G just holding that edge. They saw Lakia droning through double doors there, so they should have an idea that there aren't too many players halls unless it's being pushed. But that's not where Sentinels are going. Looking instead to dominate mid and set up this line. Karen is sometimes going to peek that, but it doesn't look like this round. Textures planted himself onto the half wall. He's locking directly down into the tunnel angle. Can they cause a distraction in B main that pushes people into Zeken's crosshair? Oh, Zeken. It's all about the reactions, but Texture, of course, he's favored. On LAN, already in position. It's all on Zeken. Zelsis seeking to just sow that chaos and discord into the map, at least with the pit laid down. Gen.G feel it really imperative to try and clear this one, but they're already just losing players. Sentinels toppling like flies. Tens, he has worked his way deep. Gate crash now into the back of the site, so Meteor's going to be rejoining his team, and they have reinforced that area with 20 seconds left. What is the call? Jumping away and on high, but still they're surrounded with this pit. How did they even get themselves into the site? It's 12 seconds. Time working against them again. Lakia to play to do the most. Spoiler, there it is. Branley spraying them through with 5 seconds down. No chance of sticking. I don't believe there's any time, and even if there was, Lakia could have absolutely sealed it up anyway. Beautiful work from Gen.G. And that round should be the first nail in the coffin here for map 1. They're going to push Sentinel's economy down into a really rough spot again. And Texture opening things up. It just looks so simple from his point of view. All of these Gen.G players, they're so skilled, they make it look easy. It certainly isn't. Almost every other team has struggled to deal with Sentinels. Gen.G wiping them out. This is a map where they're favored, and sure, it's closer than it was last time. But it's remarkable as Sen take a timeout, what Gen.G have done with this squad. Yeah. This is not like Sen, where it's big, heavy hitters returning to the stage looking for redemption. Gen.G, this is a new roster. Sure, some people have been here before, but others brand new to a stage like this. And Gen.G are on a 9-match win streak, beating out DRX, becoming the top Korean team, beating PaperX, becoming the top Pacific team, and then beating every other team in Madrid playoffs to find themselves here with map V2 advantage in the grand finals, 2 rounds away from locking up map 1. To say the pressure doesn't faze them, I think would be an understatement. They look elated on stage. Just having fun. They're happy to be here, absorbing it all up. And yeah, I mean, listen, the pressure probably would have gotten to some of these players a little bit ahead of time when they're playing against the top, at the time, Korean team. That was DRX, even in just the kickoffs. I mean, Gen.G, this is a squad that was put together and really had a tremendous amount of doubters. But they have slowly but surely knocked down every single obstacle they faced and more. And now the pressure is on Sen's side. They've taken this tactical timeout, and it's going to be for this round. This is them forcing up, trying to stop Gen.G from getting to 12. Little jump peek there in case Texture was on the angle. Deep knife. Cage to cover their cross as well, looking to try and split themselves into B. Now there are players here, great dash forwards with that flash. It's all combined and calculated. Munchkin layers it down now with the pits. Dropping down in this position. He's already found Zelsis. Where's the follow-up? Where's the follow-through? It's not there. Karen, the supportive util, the smoke to just prop it up and divide up the entirety of the site. And now a tasty morsel has been claimed with the spike drop down. The advantage again, rolling its way to Gen.G. It's Sentinels that are forced to react. Unbelievable play from Munchkin. How he's got the awareness and the composure to do that.
boggles the mind. This is an almost impossible spot that Zekken and John find themselves in. Gen are not giving him anything. Diligence off the charts here. No crumbs. Slight jiggles onto the angle, never overextending. 30 seconds remaining. left. Chance, but there goes the op. Is there, op down, still 18 left, and they have to deal with Munchkin. Smoke down, grabbed and out, dash forwards, but Munchkin again, they weren't expecting it right from behind. It's the IGL Oasis. And credit where credit is due for this guy. Munchkin, one of the players with the most international experience. He's been to these events before, but guess what? On a completely different team. And the deepest runs he's ever been, 9th to 10th. And now finding himself pushing up with an ace to get to map point in the first of the grand finals. And not just any old ace, not an eco ace, in an incredibly important round under so much pressure, pitting, running towards his opponents, making a mockery of them. Sen have to force up again, but it's odds and ends. It's not looking strong. It's scraps, man. Pure scraps. Take flight. They're gonna have to drag it into that territory to stand a chance in this round against Gen G. And I think they've found the most success when they've tried to find people, push people into aggressive positions, but that's almost impossible to feel good about lurking and then taking a 1v1 if your player has, you know, a bulldog or a stinger even. Yeah. The position, flash through into the box. Sassy's out wide and alone. Scared for his life, too much to deal with, indeed. Gen G lead the charge here in our grand finals of Madrid, taking map 1. Looking calm and collected doing it too. It could be a long series, but Gen G are going to try and wrap it up as quickly as possible. They had the double map bans. They got to pick the first, and they've set the tempo. Certainly closer than last time, but as soon as Gen G got onto the defense side, it looked like some of the same difficulties again. Absolutely, and plenty of questions up in the air as well. Bind is up next. Gen G haven't played it at all so far at this tournament. What are they going to be coming out with here in our grand finals? Hey guys, it's Jimmy Lin. In this series, I'm going to walk you through attack on Pearl. Watch out for the stairs, clear this angle, you're going to be able to fight this. Red Bull gives you wings. Tengo mucha
cosas que decirte ahora, pero antes de empezar quiero que le demos sin freno. Si tú quieres podemos empezar desde cero. Sabes que contigo yo me atrevo y quiero más y más. Y poder soñarte y verte al despertar y volar, porque solo tú me llevas a otro lugar. Quiero más, solo dime, baby, que no va a pasar. Quiero más de ti. Solo quiero más de ti. Hey, hey, no. Solo quiero más de ti. Solo quiero más. Solo quiero más de ti. Sabes que quiero dejarme llevar. Conmigo lo malo se te va a olvidar. Contigo me voy, no miro el reloj, sin mirar atrás. Permiso el vuelo, que este es un viaje perfecto. Ignoramos los defectos, todo lo que dice el resto, todo lo que dice el resto. Tenemos algo perfecto, ignoremos los defectos, todo lo que dice el resto. Solo quiero más de ti. Hey, hey, no. Solo quiero más de ti. Solo quiero más de ti. Contigo nada me resta. Las ganas solo te aumentan. Ya es por mí. Somos de otro planeta. Somos de otro planeta. What a fantastic start it is for Gen G. I'm now joined by their coach Solo and Jen to do some translations. Now, the last time you faced them on this map, it wasn't as competitive. They clearly made some adjustments coming into this. Did you guys also have to make some adjustments on Breeze as well? 감독님, 지난번 센티널스를 만났을 때보다 훨씬 더 접전인 경기가 펼쳐졌는데요. 센티널스도 많이 준비를 해왔고 또 젠지에 맞춰서 좀 카운터를 많이 준비해온 것 같았는데 젠지도 오늘 하면서 좀 즉석으로 전략에 변화를 주던가 아니면 어떤 준비를 했는지 궁금합니다. 저희가 원래 하던 대로 하려고 했는데 그 센티넬이 생각보다 라우드식으로라고 해야 되나? 준비를 잘 해왔더라고요. 그래서 저희